यो आ गया मैं। फिर तो एक कुछ चीज़ें हैंडल कर लेता हूँ, उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। Being a captain takes more than just captain grade strength. The most important thing is... I don't know. If I did, I'd be a captain by now. Oh, let's go. अरे मुझे डूरिंग के स्किल के लिए काम कर लेना चाहिए आज। यो अबिस भाई, क्या हाल है, क्या चल रहा है? डूरिंग का स्किल डे नहीं है। What up? 32, 40, 44. ये वही बढ़िया ही रहना चाहिए। ये बहुत है ना। इस वक्त से बस मुझे ये दिक्कत है, ये मुझे इसके मैकेनिक्स अभी तक क्लियर नहीं है। ये बस इसको क्राई एप्लीकेशन चाहिए होता है, इसका ये है मेरे पास, बट आई डोंट रियली नो। Oh my god, right? डैमेज क्यों हुआ मुझे? कितना डैमेज है इसका भाई बंदे का? ओके, फिर भी ग्राइंडिंग ऑन मेरा अकाउंट हो गया। ओके, तो ये टीम टेक्निकली ये बॉस के साथ डील कर सकती है। नाइस। तो व्हेन विल यू ग्राइंड ऑन योर मेन अकाउंट? मैंने कल रात को, जैसे कल मेरा प्लान था कि मैं अप्रॉक्सीमेटली कुछ थोड़ी देर के लिए मैं फार्म करूँगा, बट आई एंड अप बीइंग ग्राइंडिंग फॉर लाइक 10 फुल 10 आवर स्ट्रीम। और फिर इसके बाद में भी मुझे अराउंड, मैंने सोचा था कि, और ज़्यादातर लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि 75 पुल्स पर मोविका मिल जानी चाहिए, बट मैं वापस से 80 पहुंच गया। वापस 80 पुल्स करने के बाद देन आई डिसाइडेड कि अगर अभी नहीं मिल रही देन आई डोंट रियली वांट हर। आई थिंक आई विल जस्ट स्किप एवरीथिंग। अगर मेरा अकाउंट इतना ही अनलकी है कि एवरी सिंगल टाइम आई हैव टू गो फॉर अराउंड 170 पुल्स टू गेट अ कैरेक्टर, आई डोंट रियली वांट देम एनीमोर। आई वॉन्ट टू फॉरगेट दैट नाइट। हाँ, आयुष भाई थे मेरे साथ में, आयुष भाई ने सब कुछ विटनेस किया है। थोड़ा सा था, अच्छा नहीं था। इट्स नॉट लाइक कि मैं ये गेम पे गिव अप कर दूंगा ये पॉइंट के बाद, नो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई गेम नहीं है जो मेरी विल ब्रेक कर सके, बट क्या कहते हैं, लास्ट नाइट वाज काइंड ऑफ पेनफुल।
कितना अराउंड 44 चाहिए ना ड्रॉप उसको, तो मेरे ख्याल से एक रन और इनफ होना चाहिए। Thunder! The abyss is burning! I'm going in! Weak numbskull! No fairy tale ending. ओ भाई ये डैमेज तो एक्चुअली बहुत करता है। Stay away from me! Off to the freezer! Goose on the loose! Goose on the Light it loose. up! Teamwork is... Trim! Rival जस्ट एज आई थॉट कि जस्ट में प्राय एप्लीकेशन अगर हो गई ये बॉस लिटरली अपनी फेस, ओ माय गॉड, एक एचपी सर्कुलेट डबल क्रिट रोल के साथ में। आई वंडर हु कैन यूज दिस, बट मैं लॉक कर लूंगा, बट मुझे पता नहीं। मैं दुख समझ सकता हूँ। मोर लाइक दुख का रीज़न नहीं है, मोर लाइक कि मुझे वो चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं अगर मेरा एवरी सिंगल कैरेक्टर उस पीटी पे जा रहा है तो मेरे काइंड ऑफ प्लान करना आगे के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज ऑन एवरेज लोगों का माइंडसेट होता है कि अ, एक एक करेक्टर को अभी क्या दो, एटलीस्ट दो प्रीमियम करेक्टर लगते हैं टीम में वर्क करने के लिए। तो एवरी सिंगल टाइम अगर मेरे को अराउंड कितने 170 के हिसाब से लगाऊं मैं तो अभी 170 टाइम्स टू 340 पुल। तो एवरी टीम के लिए मुझे अगर 340 पुल निकालने पड़ेंगे तो मुझे काइंड ऑफ काफ़ी अहेड में प्लान करना पड़ेगा और सेव करने पड़ेंगे प्रीमोस। हो सकता है कि मैं लकी हो जाऊं, बट जिस हिसाब से मेरा लक चल रहा है, बिकॉज इट्स थर्ड टाइम, लाइक अभी थर्ड टाइम ये हो रहा है, मेरे सारे प्लान्स रूइन होते हैं, इसलिए मैं ना लूनर प्लान कर पाया ना मैं नेटलैंड ढंग से खेल पाया। तो अभी मैं काइंड ऑफ प्लान करूँगा कि जैसे मेरे पास एटलीस्ट 180 पुल्स होंगे तो सेंस बनाता है मेरे लिए पुल करना, जिससे कि क्योंकि मेरा भी 10 पुल में गारंटीड है। तो 170 मैं दूसरे करेक्टर का मान के चल रहा हूँ और 10 पुल मैं अपने एक करेक्टर मान कर चल रहा हूँ, जिससे मैं एटलीस्ट एक प्रीमियम टीम बना पाऊँ ढंग से। तो अभी मेरे लिए सेंस नहीं बना था। अभी जैसे कि अगर मैं मूवी का निकालूंगा तो मुझे सिटलाली निकालनी पड़ेगी उसके लिए, बट अगर मुझे मूवी का ही 170 पुल में मिल रही है दैन सिटलाली के लिए मुझे उतनी पुल चाहिए होंगे अप्रॉक्सीमेटली, और इतनी जल्दी इतने पुल्स आने वाले नहीं, तो कोई पॉइंट नहीं। तो फिर मेरे लिए मूवी का बैनर सेव है। जो नेक्स्ट आ रहा है सिटलाली और स्कुलर्स नाम क्या नाम है उसका, सिंड्रोन है, वो दोनों सेम है। और आगे के उसके आगे कोलम्बीना और वो भी राइडन भी सेम है, क्योंकि वो सब कैरेक्टर्स चाहिए नहीं मुझे। रेडियंस कैप्चर विल कम, चिंता मत करो। आई डोंट नो अगर क्या उससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये है कि मेरे को सिनर्जी के हिसाब से देखकर पुल करने पड़ेंगे ना, तो मेरे लिए भी सेंस नहीं बनाता। अगर मेरे को मूवी का सामान मिल भी जाती है तो ये लक के साथ भाई नो शॉट कि मेरे को सिंड्रोने मिलेगी, और अर्ली तो मिल ही नहीं सकती ना, पुल्स है ही नहीं मेरे पास। अगर तो स्कॉफिया के लिए उसका बॉस मटेरियल हो गया ना 32 40 44, ठीक है। अभी ये फार्म करने हैं। मैंने टीपीज अनलॉक, मैंने फाउंटेन के टीपी अनलॉक नहीं करके रखे हैं। ओके भाई मेरा क्या इसको फाउंटेन अनलॉक करके थोड़ा सा पहले रेजन स्पेंड कर लेता हूँ। रेजन स्पेंड करना प्रोबेबली वाइज चॉइस रहेगी यहाँ पर। आज इसका टैलेंट डे है, आज इसका टैलेंट डे नहीं है। व्हाट अबाउट वेपन, मेरे अकाउंट में लोकल लेजेंड मारे, मुझे अचीवमेंट चाहिए। हाँ अभी मैं क्या कहते हैं इस सीरीज़ में ही आगे लॉगिन करूँगा ना, क्योंकि अभी मैं ये नीचे अकाउंट में खेल रहा हूँ। फिर उसके बाद में ये अकाउंट का जब हो जाएगा आज का, क्योंकि आज शायद थोड़ा एक्सप्लोरेशन भी करना है। फिर उसके बाद ये ना यूला के अकाउंट की बारी आएगी कि आर्टिफैक्ट ग्राइंडिंग उसका डेली का। फिर उसके बाद में डी मेन अकाउंट आएगा। ओह माय गॉड, क्या मैं स्कॉफी के लिए फार्म नहीं कर सकता?
राज लोहिन का टैलेंट आई नो लोहिन का म्यूजिक मैथ व्हाट अबाउट बेनेट का भी दिन नहीं है आज कौन से करेक्टर का डे है एक सेकंड मुझे कुछ चेक करना पड़ेगा करेक्टर इससे पता लग जाता है कि आज के दिन कौन सा है तो एशिया में आज है बेनेडिलू क्यूला ये सब वेट टेक्निकली आज बेनेट होना चाहिए ना ये अमेरिकन सर्वर से तो डालिया डूरीन फिशर डूरीन पर डूरीन का तो नहीं है यार मैंने चेक तो नहीं है ये साइट ढंग से वर्क नहीं करती शायद से आज कौन सा डे है आज है थर्सडे मंडे एंड थर्सडे की मंडे थर्सडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे सैटरडे एंड फिर संडे को सारे होते हैं मटेरियल्स तो आज मंडे और थर्सडे वाले ड्रॉप्स हैं लामा और कोलम्बीना लामा के लिए कुछ काम करता तो लामा के लिए काम कर सकता ओके लामा के लिए काम कर सकता है बस ऑलरेडी है नो हाँ फिर उसके हिसाब से ले लाइन इट इज How can I give Kazwa more EM? देख लेते हैं तुम्हारा एशिया सर्वर का अकाउंट होगा 87800399 Kazwa Einstein ओके उसका सेट है उसके पास okay I know you want more EM on Kazwa but at least उसका स्किल और उसका अल्टीमेट को लेवल 9 कर लेना बट वी विल फोकस 999 EM तो तुमको कितना एक्स्ट्रा EM चाहिए वो ऑलरेडी 1000 EM पे है कितना और चाहिए क्या तुमको ऑफिशियली 4 डिजिट हिट करने हैं ऐसा केस है क्या चीज़ है अच्छा तुम्हें तो ऑफिशियली 4 डिजिट हिट करना है तो तुम्हें वो 4 डिजिट यहाँ पे हिट करने हैं या इन कॉम्बैट हिट करने हैं क्योंकि तुम्हें काफ़ी सारे करेक्टर्स EM देते तुम्हें फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी करेक्टर पे इंस्ट्रक्टर सेट चलाते हो 4 पीस तो उसके स्किल या बर्स्ट करने से सबको 120 EM मिलता है तो ऑफकोर्स यहाँ से ऐड हो जाएगा प्रोफाइल पे अच्छा प्रोफाइल पे चाहिए 82 EM ओ माय गॉड फ्लावर कौन सा है 77 EM 82 EM क्या ये तीनों EM है तीनों EM तो तुम्हें अगर निकालना है ना देखो अनफॉर्चुनेटली तुम्हें अपने फ्लावर पे से ही निकालना पड़ेगा आई नो कि ये काफ़ी अच्छा पीस है इंस्ट्रक्टर की नहीं है यूज़ कर इंस्ट्रक्टर की नहीं यूज़ करते इंस्ट्रक्टर की नहीं यूज़ करते मतलब कभी किसी और देखो
एक 4 पीस सेट है इंस्ट्रक्टर नाम से, जो कि ज़्यादातर लोग फॉल्टर कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इंस्ट्रक्टर का क्या यूज़ है भाई, इंस्ट्रक्टर 4 स्टार पीस है ना, 4 स्टार पीस कौन यूज़ करता है। बट इंस्ट्रक्टर आई गेस 5 स्टार में आता नहीं है, तो तुमको उसको 4 स्टार में यूज़ करना पड़ेगा। बट उसके 4 स्टार वो क्या कहते हैं उसको, 4 पीस सेट से तुमको 120 EM मिलता है सारे पार्टी मेंबर्स को। तो तुम इस पे चलाने के लिए नहीं बोल रहा मैं, इसके टीम में किसी के साथ चलाओ तो इसको EM मिल जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो नहीं यूज़ करता मैं, सिटलाली पे लगा के हूँ, पर यूज़ नहीं करता सिटलाली। ओके देखो, तुमको अगर EM चाहिए ना, ठीक है, आई विल से इट ब्लंटली कि तुमको या तो एक ऐसा वेपन चाहिए जिसका एलिमेंट्री मैस्ट्री स्टैट ज़्यादा हो। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, राइट। अगर तुमको ऑफिशियली 1000 EM हिट करना है काजुआ पे तो मैं ज़रूर खाने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी। या अगर तुमको एक चाहिए ना, तो तुमको मिन मैक्स करना पड़ेगा अपने, या तो फैदर के लिए, जो कि बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी प्लेयर को करने के लिए। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, वेपन्स swords, let's see। तो एक अपने पास एली फ्लैशर है, आई डोंट नो कि उसके पास मैक्सिमम एम कितना होता है। मैं एक्चुअली देखता नहीं हूँ, बट हमको मैक्सिमम EM 55 मिलता है, जो कि इससे तो बहुत कम है। अभी मैंने नोटिस किया कि एली फ्लैशर का चाहे बेस अटैक बहुत ज़्यादा हाई हो, सिग्निफिकेंटली है, बट उस पर EM बहुत ख़राब है। सिग्नेचर सपोर्ट का सिग्नेचर मुझे ज़्यादा वर्दी लगता है। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ तुमको कि उसके लिए तुम्हें फ्रीडम सॉन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रीडम सॉन का EM बहुत ज़्यादा है। जैसे तुमको उसके 90 लेवल पे 198 EM मिलेगा, और अदर देन तुम्हारा 165, तो तुमको ऑब्वियसली यहाँ से ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली तुम आराम से 1000 EM पहुँच सकते हो। बट अगर तुम्हें सिर्फ 1000 मार्क को क्रॉस करना है तो उसका यही वे हो सकता है, क्योंकि देखो बाकी तुम्हारे पीसेज में मुझे कुछ लग नहीं रही, क्योंकि बाकी काजुआ पे क्या करना होता है कि उसके तीनों गॉबलेट सैंड्स और सर्कुलेट तीनों पे EM डालना पड़ता है। और अगर तुमको अपने प्रोफाइल पे 1000 EM चाहिए ना, तो जैसे ये पीस बहुत अच्छा है, 82 प्लस EM बहुत रेयरली मिलता है ना। आई नो कि 77 EM भी बहुत मुश्किल मिलता है, पर तुम्हें सम हाउ सारे ऑड्स बीट करके यहाँ पे भी 80 लेके आना पड़ेगा उसके लिए, जो कि वर्थ इट नहीं है ऑनेस्टली। ऑन सेट ढूंढना मुश्किल है, ऑफ सेट भी ढूंढना मुश्किल है। सारे स्टैट्स यहाँ पे अच्छे हैं। अगर तुमको उसके वेपन में इन्वेस्ट नहीं करना है और तुम्हें बस एस्थेटिक रीजंस के लिए चाहिए यहाँ पे 1000 EM, तो देन यू कैन डू दैट। ईदर ऑफ दोज ऑप्शन है तुम्हारे पास। मुझे ये नहीं पता कि जी फोर्स मूनलाइट ज़्यादा देता है EM, बट आई डोंट थिंक सो कि जी फोर्स मूनलाइट ज़्यादा देता है। वो दोनों इक्वली ही देते हैं। जैसे जी फोर्स मूनलाइट भी आई बिलीव कि उतना ही EM देता होगा, 165 EM, यस ऑफ कोर्स। तो तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि गेम बहुत कम अच्छे EM सोर्स हैं। आई मीन जी फोर्स मूनलाइट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि तुमको एनर्जी रिचार्ज इंक्रीज करता है तुम्हारे ओवरऑल टीम का। बट उसके बियॉन्ड मेरे को नहीं लगता तुम्हारे लिए ईजियर रहेगा कि तुम फ्रीडम सोन पुल कर लो ये पॉइंट पे, या फिर बैठ के मिन मैक्स करो अपने फ्लावर के लिए। और क्योंकि तुमने फ्लावर ऑलरेडी ऑफसेट लगा ही रखा है, तो बेटर यही रहेगा कि तुम अपने आर्टिफैक्ट्स में जाओ, या फिर जो काजवा पे जाओ, फैदर खोलो, इसको क्या कहते हैं, नॉन सेट फिल्टर को ऑन करो, और यहाँ से सब कुछ हटा कर सिर्फ EM सेलेक्ट कर लो।
तुमको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसमें ईएम होगा। अभी जैसे देखो, एक ऑलरेडी लेवल्ड अप पीस 47 है यहाँ पे, क्योंकि ईएम बहुत कम मिलता है। आई नो, मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास 90 प्लस सीवी का, 90 प्लस ईएम का वो है, आर्टिफैक्ट पीस है। बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालने का। छोड़ो, 999 पे ही चलाना पड़ेगा। बुरा नहीं है, ऑफ कोर्स बुरा नहीं है। बहुत लोग चलाते हैं उसको, उस पे ही, उससे भी कम ईएम पे भी चला लेते हैं कुछ लोग। मैं बस बता रहा हूँ, और तुमको चाहिए ही ना। पहली बात तो चलाने की बात ही नहीं है। तुम किसी भी टीम में किसी को भी तुम नाहिडा निकालोगे, नाहिडा ईएम दे देगी, सुक्रोस ईएम दे देती है, डायोना ईएम दे देती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो ईएम दे देते हैं। और अगर तुम वो कैरेक्टर्स भी नहीं निकालने, तो किसी भी वो क्या कहते हैं कैरेक्टर को तुम ये इंस्ट्रक्टर सेट दे दोगे तो वो 120 ईएम इंक्रीज कर देगा तुम्हारे लिए। और ये 4 स्टार पीस है। एक मिनट, हाँ ये नहीं, नहीं, अच्छा ये अभी भी मुझे टाइनी मिरेकल क्यों दिखा रहा है अगर मैंने इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट किया था तो। या जो भी करेक्टर को ईएम चाहिए होगा ना, उसको ये दे देना, सीएम मिलेगा, उसके बाद में एलिमेंटल रिएक्शन ट्रिगर करने में 120 ईएम ईजी, काज 1000 ईएम हो जाएगा। तो मैं कॉम्बैट में कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। या फिर और भी मल्टीपल वेज है करेक्टर को ईएम देने के। सुक्रोज दे सकती है ईएम। मेरे पास एनेमो डैमेज गॉबलेट है या 111 ईएम के साथ में। तुम्हारी मर्जी है भाई, जैसा तुम्हें सही लगे। अपने डिज़ायर्ड स्टैट पुल करना एक ऐसे गेम में जिसमें सारे स्टैट आरएनजी होते हैं, वो काइंड ऑफ हार्ड होता है। काइंड ऑफ हार्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा आरएनजी होती है, तुम्हारे विल पे होती है वो चीज़ की तुम्हें करनी है या नहीं करनी है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं देख रहा था कि आज क्या इंसान मेरे पास है नहीं, स्कर मोलानी नहीं है मेरे पास, ये सब कैरेक्टर्स नहीं है, ये नहीं है। सुक्रोस, सुक्रोस मेरी बिल्ड है। I don't think मैंने कभी सुक्रोस बिल्ड कर ही सका हूँ। ओके, तो पहले देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन से कैरेक्टर्स हैं जो बिल्ड नहीं है। सुक्रोस वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स है। व्हाट अबाउट फिशर? मेरी फिश किधर है? ये फिश, हेलो फिश। आज शायद फिश का भी टैलेंट डोमेन डे नहीं होगा, नहीं है फिश का भी। ये चीज़ वैसे मुझे समझ में नहीं आती कि गेंशिन एक्चुअली कभी फिक्स करेगा। तुम्हारे पास जो कैरेक्टर्स हैं, तुम्हें उनको डे लॉक क्यों करके रखने का है? अच्छा, ये दिन नहीं है आगे। ओके, गेमिंग का डे आज। तो प्रॉब्लम तो कभी आनी नहीं चाहिए गेमिंग में काम करने का। पता तो उन लोगों ने गेमिंग एक्चुअली यूज़ करूँगा कभी का नहीं।
एलिफ इट इज। अगर मेरे को एलिफ को मारने का एक रीजन दोगे मैं उसको जाके मार दूंगा। मुझे ये फार्म करना अच्छा लगता है। क्वेश्चन ये है क्या डोरीन उसके वो क्यूब डिस्ट्रॉय कर सकता है? A little amuse. Going in. Element for the end. ओ भाई Leave none stay. ओके मैं हिट तो करता हूँ उनको। आई थिंक ये टीम के लिए एलिफ को फार्म करना कुछ ज़्यादा इजी है। अच्छा आर्टिफैक्ट नहीं मिला बट अनफॉर्चुनेटली Attack. Back. A burst of flavor. Everybody stand back. Why do they never miss? Stay away from me. Trim. I will judge. ये बंदा बच गया बस बेयरली। Struggle all you want. A little amuse. Leave none stay. बस ड्रॉप है क्या? हाँ ओके फार्म नहीं कर सकते इसको। हाँ मुझे वो चेक करना है इसका रीसेट हुआ होगा ना इसका पीए का। लेट्स सी। And inspired. हाँ Let's रीसेट light हो it गया। up. ओह एक गोल्डन मिला मुझे उसको। Let's light it up. ओके मुझे अभी तक सिर्फ एक वाला गोल्डन गोल्डन मिला। Let's light it up. ओके हो गया खत्म। तो वीकली इतने ही मिलते हैं और शायद एवरी वीक रीसेट होते हैं। Let's light it up. या इतने ही मिलते हैं। Off to the freezer. Thunder. हमको कितने डिशेस मिले वैसे एक्चुअली? काफी मिले ना। मेरे पास वो कितने वाले गोल्डन वाले मेरे पास ये 6 हो गए हैं। और एक और होता है। ये लो रेट ठीक है।
ये वाला, ये सब ब्लू रेयरिटी का, गोल्डन रेयरिटी का सिर्फ एक है ये वाला। ये वीकली रेयरली चांस होता है इस पर। तो ये इससे कितना अच्छा है, जैसे कि ये वाला जो है अडैप्टिव स्टैंडेशंस इंक्रीजेज ऑल पार्टी मेंबर इन अटैक, increases all party members attack by 310 and created by 10% for 300 seconds. In co-op mode, this effect only applies to your own party characters. Your own characters, ठीक है। और ये वाला increase all party members attack by 372, तो ये ऑलरेडी इससे ज़्यादा है। और crit damage 24, तो ये crit damage दे रहा है। In co-op mode this effect, हाँ, तो ये आई थिंक ओनली है जो crit damage देता है। आई थिंक इसके अलावा है नहीं कोई। और इसके लिए, और ये वाला तुम्हें फूड चाहिए तो शायद ओनली दो ऑप्शन हैं जितना मुझे पता है। ओनली दो सोर्सेज हैं, एक तो कॉफ़ी एयर से निकालने का एवरी वीक, और क्राफ्ट इसको शायद इसको कर सकते हैं। आई डोंट नो किसको क्राफ्ट कर सकते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं वो अपने बर्थडे पे भेजती है तुमको। नहीं उसको नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, बना नहीं सकते। आई डोंट नो किसी काम के होंगे कि नहीं, वो मैं कभी पर्सनली यूज़ नहीं करूँगा। Come take a look. There will definitely be something that catches you. Add Astra. Add Astra. मैं लोहिन की स्टोरी क्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे हाँ सही याद दिलाया, लोहिन की स्टोरी Thank क्वेस्ट you for करनी था। नहीं अभी भी मैं देखता हूँ ना, हर चीज़ फाइल्ड अप रहती है। और हाँ वैसे अगर तुमने मिस कर दिया आयुष भाई, तो मैंने स्कॉफियर के वो वीकली वाले वो निकाले थे, जो ड्रेस वो होते हैं डिशेस होती हैं। और मैंने अभी बैठ के चेक किया तो अपेरेंटली मेरे पास उसके गोल्डन लेवल जो वो है ना गिल्डेड हॉल, मेरे पास 6 गिल्डेड हॉल है उसके। वो भी तब जब मैंने इतना ज़्यादा मिस आउट किया उनको निकालना गिल्डेड। मेरे को नहीं लगता इसको क्राफ्ट कर सकते। ये वन ऑफ द बेस्ट फूड बॉक्स है पूरे गेम का। और इसके सोर्सेस सिर्फ एक ही हैं, या तो एस्कॉफियर से निकालो या फिर एस्कॉफियर तुमको अपने बर्थडे पे बेचती है। उसके अलावा मुझे नहीं पता और कहाँ से मिलता है ये। शायद से रेसिपी अनलॉक कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं पता मुझे। अगर तुम्हें पता लगे तो बताना। मैं प्रॉब्ली कभी यूज़ नहीं करूँगा उनको। अभी दिल को चेक कर लेते हैं। इवेंट हो चुका है, सीजन से रिवॉर्ड्स निकाल चुका हूँ मैं। इसका थोड़ा टाइम रह रहा है, ये मिल ही जाएगा मेरे को 3 हफ्ते में। हाँ स्टोरी क्वेस्ट कितने 4 दिन है अभी टाइम है। एक्सप्लोरेशन करना है पहले, डॉर्मेंट स्पोर्ट में जाकर थोड़ा एक्सप्लोरेशन करते हैं, क्योंकि वहीं पे एक्सप्लोरेशन अभी रह रहा है। लेट्स सी, मुझे 80% पे पहुँचना तो नहीं है, मुझे कितना चाहिए उसका देखना पड़ेगा। एटलीस्ट शायद 20% मुझे करना पड़ेगा डॉर्मेंट स्पोर्ट में। उसके लिए रीच 80% एक्सप्लोरेशन प्रोग्रेस एट 80% पहुँच तो गया मैं टेम्पल ऑफ स्पेस में। एंड तो मुझे यहाँ पर थोड़ा तो प्रोग्रेस करने पड़ेगा, जैसे यहाँ पर एक्सप्लोरेशन अभी 27% है। वी विल सी कि कितने परसेंट पर मुझे वो दे देता है रिवॉर्ड। Know of any new orchestral pieces? I like to swap out the background music in the kitchen once in a while. It's a great way to find new inspiration. मुझे जो होता बिल करनी है कर लेनी चाहिए।
प्लेन्स का सस्टेनेबल बनाने के लिए मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है कि जहूद एक्चुअली करती क्या। आई होप कि वो अच्छी कैरेक्टर होगा तो मैं प्लेन्स के लिए चाहिए था। मैंने बस इतना सुना है कि जहूद उतनी यूज़फुल नहीं है जितना लोग उसको बोलते हैं। An ऑलमोस्ट important काइंड ऑफ part of यूजलेस cooking is कैरेक्टर making है। sure the ingredients absorb the flavors in the dish. To that end, a chef must be able to wield a knife with the same level of precision as a surgeon. Practice makes perfect. कॉफी कम या पिंग नहीं करती। अरे ये वाला चेस्ट किधर है? बेडरूम में। एक कॉमन चेस्ट ले इंसान क्या नहीं करता। Okay, I can get behind this filling. I don't आज काफी लो एनर्जी फील हो रहा है। तो यहाँ पे कहाँ पे है? हाँ ये। Okay, I can get behind this filling. यहाँ पे तो हिलीचल्स डांस कर रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे उनका मर्डर करना पड़ेगा चेस्ट के लिए। फॉर्चुनेटली A dash of frost. बेचारे फार्म हो गए। Ah, the spoils of war. Let's see what's inside. The spoils of war. Let's see what's inside. ये लोड क्यों नहीं हो रही है? मुझे पता है। Being a captain takes more than just captain grade strength. The most important thing is. I don't know. If I did, I'd be a captain by now. At least low in honest है। Off to the freezer. Thunder! Stay away from me! I'm going in. Let's fight! ओके इन दोनों को मारने का सिर्फ ये एक चेस्ट मिलता है। A meager haul. Still, it'd be rude not to take it. What about these though? अच्छा वो अंडरग्राउंड है। मैं अंडरग्राउंड टिप अनलॉक नहीं करेगा। नहीं अंडरग्राउंड टिप नहीं है मेरे पास। एटलीस्ट यहाँ पर ट्रायल कर सकता हूँ।
टेस्ट पे क्या रही है? यहाँ पे ट्रायल है, दिख नहीं रहा कहीं पर वो। शायद ऊपर जाए। हाँ ये रहा। Ah, the spoils of war. Let's see what's inside. यहाँ पे विंड करंट है क्या? यहाँ पे विंड करंट नहीं है। वो बता ट्रायल। ये वन ऑफ दोस पार्टिकल्स वाला है, 65 पार्टिकल्स। काम कर रहा हूँ मैं। Huh. इसको मार्क कर देता हूँ चेस्ट को, रियल पे यहाँ आ ही गया होगा। No traps, no poison smoke. Ah, how unimaginative. Huh. No traps, no poison smoke. Ah, how unimaginative. ये सब अंडरग्राउंड एरिया में है। यहाँ पे ट्रायल है और इकोनॉमिक चेस्ट है। विल सी कि उधर कैसे पहुँचते हैं। ओके। Towering claw! Teamwork is dreamwork! No fairy tale ending for you. Nada kundala. Huh. No traps, no poison smoke. Ah, how unimaginative. हाँ यहाँ पे घूम कर रख सकते हैं। हाँ नीचे है वो। ये ट्रायल नीचे क्यों है? इतना इतना ओपन स्पेस अवेलेबल है, तुम वेस्ट कर रहे हो स्पेस को। पर तुमको नीचे ही डालना है ट्रायल में। इसका के लिए वो नहीं है कि कोई सा ढंग का विंड ग्राइंडर, लेकिन उस पे ये वाला नैटलिन वाला विंड ग्राइंडर ज़्यादा बेटर लगेगा। डोंट नो, काइंड ऑफ मैच नहीं कर रहा उसके वाइब्स के साथ वो। नैटलिन वाला अनलॉक करना पड़ेगा उसके लिए।
A meager haul. Still, it'd be rude not to take it. तो teleport rewind दिया. Nice. Yo, hello, क्या हाल है? Educax? It's Educax. EDUCX. I don't know, तो मैंने तुम्हारा नाम से pronounce किया कि नहीं? I feel like the Educax बोलेंगे. Education plus cax. Education वाला होता है. But anyways, क्या हाल है? क्या चल रहा है? मैं currently डॉर्मेंट पोर्ट का exploration कर रहा हूँ. और मुझे कॉलम लेने के लिए प्रीमो सेव करना था उसके लिए. ये हो गया. तुमने कोई कैरेक्टर्स खोल कर रिसेंट में? लोहेन या मूवी का जो भी कैरेक्टर अच्छा लगता हो. ये वाला जस्ट किधर गया? इधर. ओ यहाँ पे है. Huh. छिपा के रखा है भाई चेस्ट. Perhaps no poison smoke? How unimaginative. A meager haul. Still, it'd be rude not to take it. बाकी सारे ये अंडरग्राउंड एरिया में, तो इनको निकालने के लिए थोड़ी परेशानी आएगी. बट ट्रायल तो मैं कर ही सकता हूँ. अनफॉर्चुनेटली यार ये वाला इतना ऊपर क्यों है? ये क्या कूल तो लगता है दिखने में, पर पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न ये एरिया थोड़ा लैग करता है मेरे लिए. शायद से कुछ ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है यहाँ पे. इधर कहीं पे है, इधर कहीं पे है. हो रहा देख गया. ओह माय गॉड भाई, इसने डिज़ाइन किया है ये, इनको क्लाइम कर ही नहीं सकते. और जितना मैं जानता हूँ उन चीज़ों को भी क्लाइम कर ही नहीं सकते. क्या ये कर लेगा इसका? ओके, ये नहीं कर पाएगा. हाँ, रेंज कैरेक्टर चाहिए होगा आई गेस. कोई बोल कैरेक्टर नहीं है अंदर. At the ready.
ओ ऊपर चला गया वो। The spoils of war. Let's see what's inside. Cutscene. If you want to know who's the strongest warrior, look no further than our captain. He can hold back the abyss with pure physical power alone. Ha! Exactly the sort of drivel I'd expect from someone who's never seen real combat. Do you think powerful warriors just stand around hitting wooden dummies? Besides, even if we're talking raw strength, I doubt he's a match for our Grand Master. Oh, that's enough. I didn't invite you both here to listen to you bicker. Lowen? And isn't that Leifhelm and Slashnev? What are you guys doing together? And what brings you two all this way from Nodcry? I heard there were a couple of combatologists in Nodcry, so I invited them over to help me compile a Formidable Foes field book. If only I'd known combatologists were so darn combative. Well, guess I'm gonna have to knock their heads together and see if I can't get them to be a bit more professional. I'll start drawing up a list right away. Captain Lowen, I'm not trying to be uncooperative. It's just that the word formidable is far too vague. Never mind regular monsters, even the power gap between the Archons is huge. If we don't find a suitable benchmark, I'm afraid any further discussion will be pointless. If we're talking about a benchmark of power that everyone can accept, we should probably go with dragons, right? Dragons? इसको ड्रैगन से फाइट करनी है अभी। Seriously? Paimon feels like the power gaps between dragons aren't much smaller than those between the Archons. Why do you want to compile a formidable foe field book anyway? Sounds like a dragon got your attention. Well, long story short, after a period of reflection, I concluded that the best way to get even stronger was to challenge the most powerful opponents from all over the world. Screw loose है भाई इसका. Isn't that what you were already doing before? But then, earlier this morning, just as I was about to set off, this weird-looking thing appeared in front of me and started talking a bunch of nonsense. Lost human, thrice shall you face the might of the dragon. Then, and only then, will you comprehend the true meaning of strength. Barbalot. That sounds like something Barbalot would say. I'm not one for believing in prophecies, but, well, let's just say that I feel like I'm being played here, and I don't like it one bit. Dragons, huh? Here in Mondstadt, you'd have to be talking about Dvalin or Ursa the Drake, or else those legends about Dragonspine. What else is there? Well, clearly that's where your knowledge falls short. According to top secret intel I acquired in Nodcry, a powerful ancient dragon has recently snuck into Dorman Port. Seriously? No way! Well, if we want the truth, there's only one way to find out. Seek the mysterious ancient dragon. यहाँ पे एनेफा क्या कर रहे हैं फाइनों के साथ? Enough! Did you see that windmill? I need you to make a record of how it works. Understood. Preparing to photograph the windmill. Would you like to be included in the picture this time? Huh? Traveler and Paimon? And Lowen? Hey there! Oh! Intel
ancient dragon. Paimon sees what's going on. हाँ तो एनएफा को चैलेंज करेगा वो क्योंकि उसके पास कोर है वो वाला. Assessing situation. It appears that Mr. Lowen hopes to fight me. Is that correct? In a nutshell, yes. That's exactly what I was hoping to do. Back when the expedition was in Nodcry, I had no reason to suspect you had such an extraordinary history. But that's all by the by. I've been wanting to test my skills against you for quite some time now. So, how about it? Enough, show him who's boss. My apologies. According to today's schedule, we still have to visit Mondstadt to collect some special components. My assessments indicate that fighting you now may impact our subsequent operations. Oh yeah, I almost forgot. We heard there was some sort of giant robot in Mondstadt. That's why we're here. But then I got a little sidetracked. It's alright. I understand. I wonder इन दोनों की फाइट होती तो कौन जीतता. Seriously giving up just like that? If I help you deal with the ruin guards, that should clear up your schedule, right? No drinking on work. ये वाले एरिया में कितने टाइम बाद आया हूँ एक्चुअली. हाँ तो उन्होंने one of those daily का missions को बस रीस्पैम कर दिया. अच्छा नहीं पूरा कट सीन है. This one here? Enough, strip it for parts. हाँ एनएफआ यूज करने को मिलेगी हमको. Let's see कौन सा ट्रैवलर है. Time to ignite. Chew on this. एनर्जी क्यों नहीं है. Insulation chamber. Trim! I won't judge. Such fluid movements. I'd have never have guessed you were a machine. Your attacks are also very precise, Mr. Lowen. Almost mechanically so. Woohoo! New parts! I'm gonna be able to create some excellent new modules with these. And, does this mean you're free to... Enough, look for more. I want as many as we can get. Understood. My apologies, Mr. Lowen. We can talk about this later. Much more explore after much more exploration. I know Solway. Aino's asleep. Oh, did she wear herself out playing in Dornman Port? She's often like this. Her batteries drain quickly. I am sorry, Mr. Lowen, but I'm afraid I can't get up right now. I must stay here until Aino has entered a deeper state of sleep. That's quite all right. I've already seen enough to know what you're capable of. I hope my combat data provides some useful insights. By the way, the person who told us about these special mechanisms also mentioned Dragon Spine. You might want to go there and check things out. Albedo? Maybe? Maybe Albedo? Dragon Spine, huh? What? Wait, don't tell me कि actually मैं नहीं मेरे ख्याल से मैं इसकी स्टोरी क्वेस्ट शायद नहीं कर रहा हूँ. मेरे को नहीं पता मैं कौन सी क्वेस्ट कर रहा हूँ पर एक्चुअली. बट अगर ये लोडिंग की क्वेस्ट है तो मैंने एक्सीडेंटली थोड़ी ना चालू करी होगी है.
seeker of power, follower of fate, you are here Doreen. at last. It's Durin! Paimon's really not surprised at all. There's something odd about the way he's A speaking. sovereign ruler, the creation of a mage, and a descendant of angels. All wield disparate Sorry. powers, yet all were crowned as dragons. This is because dragons are the symbol of power. So, doing battle with great dragons became a way to prove your strength. Huh. I think I might be starting to understand the founding Grand Master a little better. Huh? I can see you still have much to say, but I suggest we cross blades instead. After all, a single sword stroke is worth 1,000 words. Wait. Young human, the trial you seek is far from here. You must venture to Storm Terror's lair and face the final prophecy. Why is he talking so fast? Sounds like an actor who wants to get off stage. Are you alright, Durin? You sound kinda weird today. Phew. I think I got through the important I bits. think Barber even लोग if ने I उसको did have to बोला skip करने a के लिए lot. था. I think Albedo said he needed help with an experiment, so I better be heading back now. Sorry, everyone. But वो Well, he वर्जिल sure की सीट left in पे a बैठा hurry. था. What a shame. Hey, what's this? Why exactly was Durin here? Apart from that last line about venturing to Storm Terror's lair, he just seemed to be talking nonsense. Something tells me he was only here so that the next dragon count. What? He's only here so the next dragon count as number 3. Interesting. I'm getting curious as to exactly how this prophecy will come true. मैं जरा एम्बर को रियल पिक निकाल देता पार्टी से. हम एक्सप्लोरेशन करने बैठा था. सफेद किधर है ये रे? Let's go stretch our legs while the flavors are mingling. टोटल में तो 8% और एक्सप्लोर करना है मुझे. Oh, wonderful. Now, according to Barbeloth's prophecy, the human in need of guidance should be here in no time. क्या हो रहा है? Entrance lines. Memorized. Entrance effects. Confirmed. Nothing can go wrong this time. Hey, why do you guys think the final prophecy needs Lowen to come here? Oh no! They're here already? Did Durin not finish his lines? Oh, I need to keep quiet. Could the final Might of the Dragon be talking about Dvalin? He doesn't seem to be here today, though. Technically speaking, I already saw him when I first returned home from Nodcry. He was right beside you. Oh, yeah! In Wolvendom, when you were delivering letters for Varka. Wait, so does that mean the prophecy has been fulfilled already? If we're being generous with our interpretation, then technically, I've already thrice faced the might of the dragon. But do you comprehend the true meaning of strength? Yeah. I guess that's why the prophecy has guided me here. Before this place was known as Storm Terror's lair, it was the god of storms, Decorabian's domain. But
mighty god who could conjure storms to shut out the world, couldn't stem the yearning for freedom within his own walls of wind. Yet the god of the North Wind, with whom he had once vied for the divine throne, found the answer he had always sought only after abandoning his power. Yeah, so like second.
यो आ गया मैं। एड्रियन और 22। हेलो भाई, क्या हाल है? क्या चल रहा है? Huh? There seems to be more to this kid than Varka led me to believe. The mirror of the dawning morn, Durin. For a time, they too were lost to confusion and doubt. What led them to strength was more than just power. Wow, wow. You really seem to be getting it. And Ursa too. The monster who had once been an angel. Huh? Paimon thinks you might be onto something here, Lowen. But, you're speaking kind of funny. I think I need to change something. Okay, ठीक है। Okay, first theory, now Lohin. Paimon ने बोला था, Paimon think you might be the one. You might be on to something. Like, Paimon think you might be on to something here, Lohin. But you're speaking kind of funny. Why does everyone sound like they are reading from script? The angel who chose power still बंदे yearned ने to literally remain script close to निकाल ली। humanity, eventually falling to become a pitiful monster. Oh, humans who have witnessed this all, do you still aspire to power? Hey, those are my lines. Oh dear. The cat's out of the bag now, isn't it? लंबा भाई। Pleasure to meet you, Lady Nicole. I've read your script, and I have to say, I was very impressed. Oh, why do I get the feeling that Durin dropped his copy? Oh? So that was part of the prophecy, too? Not at all. If I'd known in advance, I wouldn't have just... Regardless, it was a well-written script. Very entertaining. As a heartwarming little fairy tale, of course. I must say, though, I'm not a huge fan of being lectured to. Not even by an angel. I'll choose to believe that was aimed at my former colleague, the one who chose power. Seeing as you've read my script, I suppose you already know everything I have to say? Indeed, and I'll make sure to treat it as valued advice. Now, was there anything else, or can I get back to compiling my Formidable Foes fieldbook? He didn't say he is. He didn't say he plans to follow that advice. Pretty sure he's just going to keep compiling his field book, whatever she says. Wait a minute. I must admit, though, it's been quite a productive day. उसका I'm vision sure I ऐसा ही must have दिखता है gotten क्या? a tiny bit stronger, at least. Well, thank you, everyone. And give my regards to the production crew. लंबा। Why are humans always so difficult to deal with? Can someone tell Paimon
Do you remember dealing with Dottore and the poison left behind by Ursa in Mondstadt? I'm told that Lowen also endured his fair share of suffering around that time. Since that was a calamity caused by a former angel, it naturally fell on a current angel to set things right. Though things didn't go exactly how I planned, it seems that humanity's fate is destined to become ever more unpredictable. The guidance of angels is no longer the only thing leading them toward the future. But all those infinite possibilities? Perhaps that is precisely where humanity's true strength lies. मैंने एक सेकेंड मैंने एक्सीडेंटली उसका विचेस होमवर्क कंप्लीट कर दिया. Being Still, even if it was my first attempt, I can't believe this is how things turned out. My first witch's homework. I'll explain it all later. व्हाट मुझे एक्चुअली पता भी नहीं लगा. मैं एक्सीडेंटली उसका ओके ठीक है, अच्छी बात है. मेरे को एक्चुअली पढ़नी भी थी स्टोरी, यू नो. माइट एज वेल डोरियन का भी कर ही लेते हैं. Hey, Durin! So this is where you've been! Oh, Traveler, Paimon. What are you doing here? The real question is, what are you doing cooped up in here reading a book? The weather's nice out there, you know. Oh, well, ever since I've had more chances to interact with the people of Mondstadt, I've been having trouble telling when people are joking. For example, I saw a beautiful flower the last time I was at the florist, so I told the shopkeeper, and she said, "Ah, if you like these weeds so much, you should add some mint and sweet flowers and make it a bouquet." So I did as she said, and when I showed her the finished bouquet, she gave me a frankly terrifying look. You have a unique perspective. Feels like she's the one with the issue here. Later, Albedo opined that this happened because I have trouble understanding the meaning behind words. So after I learned the Mondstadt script, he told me I could come here and read. I was born from a storybook, so I felt that these books might be able to teach me more about the rules of this world. And, well, I guess I lost track of time. So, did you guys need something? Friends do often drop by just to say hi, Doreen. So we are here for Hexen Circle. Oh, I see. That's another rule learned then. Okay. Yep. That said, we did have business we needed to discuss, right? Yeah, we have a message to pass along from Rhindaughter. Oh, it's from Aunt Rhindaughter? No, Don't be nervous. I'm just surprised. Rhindaughter is my mom's friend, and the mother of the dragon that once existed in my stead. I supplanted him, took the fate that should have been his. So if she dislikes me, well, I'm not sure what I'd do. I don't think she hold it against you. Yeah, we're here for you. But seriously, Paimon doesn't think it's anything bad. That does make me feel better. Well, I guess I should open it. हाँ, imaginary theater में क्यों आ गया? Does this stupid dictionary transport us to some weird place again? My mom's scent.
I sense it here. Whoa! Here comes a strange cat. ये बात ब्लॉक है probably. इसका बस ये है ना मॉर्निकल है जो भी बोलते हैं इसका. I have a message to deliver on Master नहीं Rhindotter's कोई और behalf. था. Ahem. This is the first time we're meeting, so I'm not sure how to address you. But since you're Hem's child, I suppose I'll stick with Mini Durin. Though you appear smaller than the Durin that came before you, that same strength flows through your veins, not a drop less. He was a child of Humus, an incomplete creation. Thus he lacked the will to control his own strength. Yet this power was beyond what he could withstand, and so it twisted him, consumed him, thus sealing his ultimate fate. Albedo claims that you have transcended this tainted blood, becoming a being much like himself. That is his opinion. I remain unconvinced. I trust only the facts, only that which I see for myself. So take this chance, child of M. Prove yourself to me. Where did all these monsters come from? Oh, okay. Is this the proof you need, Aunt Granddaughter? Very well. My God भाई for real उन्होंने actually डूरीन दिया है हमको constellation 3 डूरीन और क्योंकि उसके पास 40% एक्स्ट्रा डैमेज होता है अगेंस्ट क्या कहते हैं जो ना वेपराइज और मेल्ट तो उन्होंने ऑफ कोर्स क्रायो साइंस दिया फाइट करने के लिए तो हमको बिगर नंबर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे you know what even more bigger numbers देखते हैं भाई The power within me is surging to the surface. 5100 This is getting easier. I think 100 के हिट कर सकते हैं हम 127 के Looks like Albedo wasn't mistaken after all. Next time, maybe don't ambush us with a bunch of monsters just to prove a point. Still, I do feel like I can control my power more freely now that we've defeated them. After hearing about you, I prepared a technique that would seal the dark power in your blood. I had planned to take this opportunity to pass it on to you. Of course, using it comes with a price. While it would maintain your existence in Teyvat, it would also weaken your connection to this world. And you are M's child, when all is said and done. How could I allow that uncontrolled power to send you down the same path as the child who came before you? But seeing you now, it appears my concerns were misplaced. M was a terrific mother, and a far more capable one than I. And I must admit, I'm rather curious to see how far you can go. How will you, an alchemical being truly integrated with this world, find your place in human society? I've never conducted an experiment like this before. As such, you may yet hold the key to some unexpected answers. Hey, you got one thing wrong there. Dory's not an experiment. He's our friend. I'm not sure I understand, but I appreciate your kindness, Aunt Rhindaughter. Ahem. And that's all Master Rhindaughter has to say. Could we get a self-introduction at least? Yeah, we're used to talking cats at this point, but one that can imitate someone else's voice? That's a first. I don't see how that's important, but if you must know, I am Sebas, a simple butler. You're friends of Albedo, yes? Strictly speaking, I am his elder. So make no mistake, I am no ordinary cat. In fact, from a biological standpoint, I am no cat at all, but rather an alchemical being. You wouldn't consider yourself a specter simply because you float in the air like one, surely. Spectre? What are you trying to say, mister? Wait कर रहा है 511. Oh, I know. Sabaz is implying that you are...
Maybe don't finish that. What thought? Hey! Oh, and considering how Master Rhindotter's message ended, I suppose this technique is useless now. I'll just destroy it. Few and far between are the people that can make her reconsider. Quite the impressive feat, young man. With that done, I'll be going now. I have another message to pass along. Perhaps we'll meet again sometime. Okay. ये काफी छोटी क्वेस्ट है तो मुझे फन लगती है ये Adventure वाली, time. अच्छी लगी ये वाली क्वेस्ट भी मुझे. Benny's adventure team. Anyways, now that we have unlocked their Axorite, जो भी buff है, secret right, increase all effort, ठीक है. Except for duration, अगर duration increase नहीं करेगा वो, but duration will trigger. Wait, but 75 उसका damage against fire slime भी increase हुआ क्या? मैंने last time देखा नहीं कि वो मैजिक पे कितना डैमेज करता है. आई थिंक मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ. इलेक्ट्रो डैमेज सर यहाँ ये कुछ टैम्पर करेगा यहाँ पे कुछ. Teamwork is dreamwork. ओके, Element for the end. लेट्स सी. 71k, 70k. Then what are we doing? Devouring claw. Element. I'm going in. 18k, 18k. वो स्कॉर्पियन कर रही है क्या मैं? क्यों, क्या हाल है? आई डोंट नो मैं तुम्हारा नाम ढंग से प्रोनाउंस करूँगा या नहीं, बट ज़ौरा के ज़ौरू एक के ज़ौरू बोलूँगा. हेलो ज़ौरू भाई, क्या हाल है? क्या चल रहा है? Let's light it up. That's gonna hurt in the morning. Everybody stand back. Decay. New life. A dash of frosting. 40. I think melt, reverse melt हो रहा है यहाँ पे. I think reverse melt हो रहा है. Anyways, एक बार डोरिन का क्रिट डैमेज दिखाओ. ओके भाई, लो देख सकते हो देखना. I think enough देख लिया तुमने. I'll continue now. I think ये चीज़ हो चुकी है. मैं थोड़ा एक्सप्लोरेशन करूँगा डोरमेंट स्पोर्ट में, जिससे जाके मुझे लास्ट का 1% मिल जाएगा. तो ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रायल्स करने का.
ओके, ये वाला तो एक्चुअली फन है, ये तो अच्छा लगता है। बाय द वे ज़ोरो भाई, क्या चल रहा है और बताओ? कोई कैरेक्टर निकाला तुमने लोहेन या मौई का? क्या तुम ये गेम एक्चुअली खेलते हो या नहीं? स्नाइपर राइफल क्यों ऐड करी उन्होंने गेम? बॉम्ब रखेगा वो? हाँ। Wow, I've never seen this before. डूरीन निकाला था। डूरीन निकोल के बैनर पे। तो तुम अपना अगर अकाउंट दिखाना है तो तुम अपने यूआईडी डाल के दिखा सकते हो। वैसे भी कितने पुराने प्लेयर हो तुम? हमारा करंटली एआर कितना है वो सब कुछ पूछ रहा था। और हाँ, मैं ज़्यादातर लोगों से पूछता हूँ ये चीज़ कि उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो वो भी तुम बता सकते हो। क्योंकि अगर किसी का गाचा गेम में उनका कोई फेवरेट कैरेक्टर नहीं होता तो थोड़ा सेंस नहीं बनाता कि लोग क्यों खेलते फिर गाचा गेम। सारा गेम एक ही कैरेक्टर्स के बारे में। लोहेन तो 50-50 हार गया। अरे यार, अनफॉर्चुनेट। एनीवेज, अगर तुमने AR-55 ओके स्लाइटली क्या कहते हैं, नए प्लेयर नहीं हो, ओल्ड प्लेयर नहीं हो, तुम काइंड ऑफ मिड ग्राउंड्स में हो आई बिलीव। एनीवेज, तो क्या कहते हैं, तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर क्या बताया तुमने? एनीवेज, अगर तुमने लाइव स्ट्रीम देखी होगी तो नेक्स्ट कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सिंड्रोने आएगी और सिंड्रोने के साथ में वो लोग किसको डालने वाले थे? हाँ, सिटलाली को। सिंड्रोने और सिटलाली को डालने वाले थे। और उसके बाद में ओके बॉम्ब इसको इजी विन फॉर मी। बीच में छोड़ दिया गेंशिन। ज़्यादातर लोग करते हैं, मैंने भी छोड़ा था। What suspense. It's like opening a gift. आई थिंक 3 चेस्ट ही मिलती हैं यहाँ से। ओके, 3 चेस्ट इट इज। तो तुमने कोई नया एरिया एक्सप्लोर नहीं किया फिर वापस आने के बाद में? जैसे डोरमन पोर्ट एक्सप्लोर किया हो। Can I stop here and play? I mean, take a stroll. I won't go too far. मेरा वन ऑफ फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक एक्चुअली डूरी। ये मल्टीपल टारगेट कर सकता है ना अगर मैं एंगल करूँ तो। मॉवी का फेवरेट है। मॉवी का ओके, आई कैन एग्री। मॉवी का एक्चुअली काफ़ी अच्छी कैरेक्टर लगती है मुझे भी। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर आई मीन लेट्स सी,
वैसे मैं यूजुअली जब भी मेरे फेवरेट कैरेक्टर की बात होती है तो आई वुड मेंशन कि किनीच किनीच मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं बट अभी स्लाइटली चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही हैं। यू नो अभी मुझे और मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में प्रॉब्ली कोलम्बीना है और ज़ीबा है। कोलम्बीना और ज़ीबा ये दोनों मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक हैं। अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक को चूज़ करना होगा तो प्रॉब्ली कोलम्बीना। अभी उसका रिसेंट में वो भी आने वाला है, How do I get along रीरन with the आएगा other कोलम्बीना knights? का। तो मैं होप कर रहा हूँ कि शायद से मुझे कोलम्बीना मिल सके। अभी मैंने रिसेंट में पुल किया था I मेरे can पास do it. कोई पिटी नहीं है, इतने ज़्यादा पुल्स नहीं बचे हैं मेरे पास। और मेरे पास लिटरली क्या 2 पिटी है बस, 50-50 है। मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा वैसे कोलम्बीना को निकालने के लिए। आई होप कि मुझे कोलम्बीना मिल जाए। पिटी में यहाँ पे ओके यस यार। Utensils at the ready. Okay, I can get behind this filling. ओके तो तुमको गेंशिन में एक्चुअली करना क्या ज़्यादा पसंद है? स्टोरी करना पसंद है, एक्सप्लोरेशन करना पसंद है, एंड गेम कंटेंट करना पसंद है? इसकी टेल में 4 क्या है? और उसकी टेल में कंट्रोल माय गॉड वो अटैक भी अपनी टेल से ही करते हैं। यहाँ पे ट्रायल है, मैं कर ही लेता हूँ उस पर जान। मेरे से तो ज़्यादा ही हैं प्रीमोस। हाँ बट आई मीन 2500 एक 10 पुल दे सकता है। 10 पुल सम प्रीमोस 14-15 पुल्स, बट 14-15 पुल्स में कभी कैरेक्टर मिलता नहीं है। मुझे कभी नहीं मिला अर्ली। बट वी विल सी। मैं होप कर रहा हूँ बस मुझे कि वो मिल जाए कोलम्बीना, देन आई गेस आई विल स्टार्ट सेविंग अगेन। मैं क्या कर दिया? वहाँ पे जाना। ये वाला मैकेनिक मुझे अच्छा लगता है, ये बटरफ्लाई वाला। तो सिंपल है करने के लिए। अभी मैं करंटली टेम्पल ऑफ स्पेस का और डॉर्मेंट पोर्ट का एक्सप्लोरेशन कर रहा था, जिससे थोड़े बहुत प्रीमोस मिल जाए कोलम्बीना के आने से पहले। आई बिलीव कि कोलम्बीना के आने में कुछ वो होंगे, इवेंट्स वगैरह होंगे। Okay, I can get behind जैसे कि मैं ये वाला इवेंट कर चुका हूँ। this जो filling. नए इवेंट आएगा प्रॉब्ली वो भी कुछ अराउंड 10 पुल दे देगा। आई जस्ट होप कि मैं 50-50 विन करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी विन कर चुका हूँ एक बार। वैसे उससे पहले मैं हारा था, लेकिन फिर भी मैं रेयरली कभी विन करता हूँ 50-50। बट मैं यहाँ पर रियली चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगा था कोलम्बीना का रीजन इतना जल्दी आ जाएगा, तो मैं उसके लिए कुछ सेव नहीं कर पाया हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ कि मैं उसके लिए सेव नहीं कर पाया और उसका रीरन आ चुका है। क्या होगा अभी? मुझे लगा थोड़ा टाइम होगा इसके बैनर को वापस आने में। मेरे को सिर्फ एक बैनर का टाइम मिलेगा, शायद से अराउंड 22 to 25 डेज। ये वाला जस्ट ऊपर है, ऊपर वाला कैसे क्लेम करेगा? हाँ जस्ट ओपन कर रहा हूँ मैं। क्या क्लेम कर लिया? Okay,
I can get behind this filling. यहाँ पे कुछ है। प्लीज ओके नहीं मैं नहीं पकड़ पाया उसको। ओके लेट्स सी यहाँ के ऊपर चेस्ट किधर है। पहले इधर चलते हैं। यहाँ पे इतने सारे बॉम्ब्स क्यों हैं? सब वो यूज अच्छा लगेगा मुझे। अरे यार शील्ड और कोई गाचा गेम्स खेलते हो? मैं पहले एक्चुअली बहुत गाचा गेम्स खेलता था, डिफरेंट कॉन्क्वेस्टा, रेल्स एंड जोन ज़ीरो और क्या कहते हैं एथर गीज़र। ये हिल क्यों नहीं रहा है? एथर गीज़र और आई मीन लिस्ट बहुत लंबी है मेरा। शायद एक स्नो ब्रेक भी था, स्नो ब्रेक उतना अच्छा नहीं लगता था। उसके अलावा वर्ड्स ऑफ विक्ट्री था, रिवर्स 99 था और आर्क नाइट था, आर्क नाइट एनफील्ड। तो मैं बहुत सारे खेलता था बट देन मैंने रियलाइज़ किया कि शायद से मेरे पास इनफ टाइम कभी होगा नहीं ये सब गेम्स को कीप अप रखने के लिए, कीप अप करने के लिए। तो मैंने फिर गिव अप कर दिया। अभी बस सिर्फ वो एक गेम खेल रहा हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। आई थिंक मैं अब लिस्ट में और गाचा गेम्स ऐड नहीं करूँगा फॉर माई सैनिटी। क्योंकि गाचा गेम्स इन इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं ग्राइंड के लिए। गियर ग्राइंडिंग आई नोटिस कि गियर ग्राइंडिंग किसी भी गाचा गेम में एफिशिएंटली वे में काम नहीं कर सकता। यहाँ पे चेस्ट एम्बर अभी तक नहीं निकाली मैंने टीम से। बट या अनफॉर्चुनेटली तुम लोहेन पे हार गए। बट आई वुड से कि यार लोहेन बहुत फन है गेम के उसका लोहेन का गेम प्ले बहुत ज़्यादा फन है। आई वुड से अगर तुम्हारे पास जब भी प्रीमोज अगर हो, क्योंकि बैनर को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है जाने रहने के लिए, 4 दिन 22 घंटे। अगर तुम्हारे पास प्रीमोज होंगे कभी तो उसको निकालना भाई, फन करेक्टर है। मैं उसके वेपन के लिए ट्राई करना चाहता था एंड आई डू हैव पिटी, मेरे पास पिटी है उसके वेपन बैनर पर। बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे पास इनफ नहीं है। जस्ट कॉज अगर मुझे फेट पॉइंट मिला तो मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा गारंटेड, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। A meager haul. Still, it'd be rude not to take it. ये फेट पॉइंट वाला उनको एक्चुअली चेंज करना चाहिए यार। क्योंकि फ्री टू प्ले प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। हमको इनफ प्रीमोज नहीं मिलते हैं वेपन्स के लिए पुल करने के लिए। तो ज़्यादातर अभी जैसे मेरा वेपन्स पे लग बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। एज यू कैन सी कि मेरे पास 3 स्टैंडर्ड है, क्या कहते हैं 3 स्टैंडर्ड 5 स्टार वेपन्स है बट सिर्फ एक ही लिमिटेड है। मेरा ओवरऑल लक बहुत ज़्यादा ख़राब है वैसे। आई कैन टेल कि मेरा बहुत ज़्यादा लक ख़राब है क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ क्या कहते हैं लिमिटेड 5 स्टार कम है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड 5 स्टार्स है। तो वो है नहीं है यहाँ पे एक भी नहीं हो रहा।
ना अभी तक एम्बर को निकाला क्यों नहीं? Stay away from Let's see. After activating the elemental monument, fly through the rings 25 times. Defeat. Okay, ठीक है. मुझे क्या एनिमा कैरेक्टर चाहिए होगा यहाँ पे? कोई एनिमा कैरेक्टर है क्या अच्छा सा? जीन है. We may leave at any. बैरियर क्यों नहीं गया अभी तक? अच्छा वहाँ छिपा हुआ है ये. अगर चेस्ट मिलती है कॉमन. Let's see, 25 rings, right? ओ ये वो वाला है कि अगर एक भी रिंग मिस करी तो दोबारा करना पड़ता है. Oh no. ये वाले रिंग अगर मैं मिस कर दूंगा तो कैसे मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं उसको हिट कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ऑकवर्ड एंगल है देखने के लिए था. काश ये विंड करंट का साउंड ना डालते हुए. विंड करंट का साउंड ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है. Defeat the treasure holder, then light up the tower. But मिल तो गया इससे. कॉमन चेस्ट मिलती है ना? हाँ कॉमन चेस्ट मिल जाएगा. What a pleasant surprise. यही चेस्ट है कहाँ? ओह नो मैंने वो वाला चेस्ट नहीं लिया. ओह नो इसके ऊपर वापस जाना पड़ेगा.
Things are going a little too smoothly today. ओके अभी जेन को निकाल देते हैं टीम से हाँ मैंने सॉफ्टवेयर लगी Utensils at the ready. treasure holders why not हाँ मिस कैसे कर दिया मैंने Get back! Element for the weak state. यहाँ पे कितने सारे स्वीट फ्लावर्स के हैं वापस फ्लावर्स स्पॉन हो गए थे यहाँ पे There's no end to this. Goose on the loose! Devouring claw! The abyss is burning! Teamwork is dreamwork! उतना सर्वाइव भी नहीं किया उन लोगों ने और ड्रॉप भी नहीं किया कुछ नहीं किया There's no poison smoke? How unimaginative. कितना एक्सप्रेशन रह रहा है यहाँ का अराउंड 75% और इस चीज़ की अचीवमेंट है complete 28 world complete 28 open world time trial challenges at Winter's Peak and Temple of Space okay. Just किधर है अच्छा इनसे फाइट करनी पड़ेगी इसलिए करके नहीं निकल सकता मैं I won't judge. मैंने स्किल करके गलती कर दी इसकी Now's our chance. Devouring claw! The abyss is burning! Everybody stand back! The spoils of war. Let's see what's inside. अंडरग्राउंड वाले भी थोड़ा रुक के करूँगा मैं ताकि यहाँ पे एक चीज़ ओह वो टीमी से बात करनी है यहाँ पे एक्चुअली एक दूसरा टीमी भी है वो काफ़ी टीमी का दूसरा भाई है ठीक है लॉजिस्टिक कंपनी मेंबर बंदे को क्या प्रॉब्लम है I didn't expect to see such a perfect jumping platform here exactly as the Mesdi people of spring warriors Mesdi warrior you should have honed your martial arts skills constantly just like Tupac I don't know you look on it did even if you're recovering from injuries wait sir just stay calm and let's talk this through if you jump from this height even a professional diver from Fontaine would definitely get injured Fontaine that's right that's where the great
hero Niku lover was originally from. He chose to plunge into the sea only for reunion with his beloved. Much I have decided to. By the way, are you from? Let me guess, Delhi? No way. Throw yourself into the sea. No way, I'm not letting you do this. Exactly, miss. Don't underestimate the swimming skill of a mastery. Wait, don't fool me. ये बंदे को कुछ I don't know पता देखते क्या होता है ये देखा ये टिमी का भाई है actually The spoils of war. Let's see what's inside. the spoils of war. Let's see what's inside. I think एक मेरे को आर्चर कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि मैंने बोर किंग से फाइट करी थी क्या शायद एक और बोर किंग ऐड किया ना उन्होंने गेम में Outrider Amber. Good night, everyone. and yes मेरी एम्बर कॉन्स्लेशन 2 है कॉन्स्लेशन 2 नहीं कॉन्स्लेशन 1 है शायद से तभी उसके 2 एरो शूट हो रहे हैं यो कॉन्स्लेशन 2 एक्चुअली नाइस है मैं उसको वो चीज़ कर सकता हूँ Utensils at the. मुझे चेस्ट कहाँ दी पर उसने अच्छा ये स्पॉन करे ओह नो ये हवा में क्यों चला गया विंड विलेस्टर्स इसको चाहिए बैनेट को चाहिए होता है ना विंड विलेस्टर्स मेरा बैनेट 90 पे है मुझे अभी के लिए ज़रूरत नहीं है उसके लिए यहाँ पे ट्रायल है अच्छा यही वो ट्रायल 20 एनिमल पार्टिकल डेज Even better than I imagined. It's my luck. ये ट्रायल वाला जस्ट इधर क्यों हुआ और लोगों ने रैंडम चीजें भी मार्क करके रखी हैं यहाँ पे कहीं हुआ है हाँ चाहिए उससे बात करनी है कहाँ पे है ये तो पहले यहाँ पे चेस्ट है पहले वो चेस्ट कलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे वो है क्या वन ऑफ दो बटरफ्लाई वाला जो है मैकेनिक वहाँ पे है कितनी दूर क्यों है Adventure time. Off we go. हाँ अभी जाओ नाइस
यो वेलकम बैक। अभी भाई क्या चल रहा है? ये तो डोरमेंट पोर्ट का एक्सप्लोरेशन अभी अराउंड 75 समथिंग पहुंच चुका है। Now that's what I call Let's see, treasure. एक बार और चेक कर लेते हैं। 76, तो फिर मेरे को ये लास्ट का रिवॉर्ड मिल जाएगा मतलब। पहले बोर्ड किंग से जाकर फाइट कर लेते हैं। कुछ नहीं, बस दोपहर की नींद पूरी करी है। तुम सोने चले गए थे क्या? पावर नैप वगैरह कुछ? मुझे पावर नैप्स की वैसे ज़रूरत है, बट मैं पावर नैप्स ले नहीं पाता। मैं सोता हूँ तो डायरेक्ट फिर 12-13 घंटे के लिए सो जाता हूँ। अभी से कल रात को मैं 5:30 बजे सोया। आई मीन रात को क्या, सुबह 5:30 बजे सोया और फिर 12 बजे वापस उठ गया। 12 नहीं, 11:30 बजे के आसपास। ये नए फ्लावर है क्या? विंटरेस्ट फ्लावर नहीं देखे कभी। Adventure time. इसका नाम क्या है? Never leave a monster. Yeah, first boar. Look at those petals. ये पता नहीं पूरी होती ही नहीं है। आई थिंक आज मैं एक्चुअली जल्दी सो जाऊंगा जाके अराउंड कुछ 10:30 to 11 o'clock। 10:30 to 11 o'clock सो जाऊंगा। कोशिश करूंगा अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करने की। मुझे तो 9 बजे तक नींद आने लगती है। तुम कैसे सो नहीं पाते? मैं पता नहीं, 12 बज जाते हैं। 12 बजने के बाद में मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ, स्क्रॉल करता रहता हूँ। फिर इसके बाद में वापस जब नींद नहीं आती तो बैठ जाता हूँ वापस पीसी पे गेम खेलने के लिए। और फिर 5:30 कुछ बज जाता है। फिर सोचता हूँ कि यार अब तो सो ही जाना चाहिए। ओ इधर यूज होते हैं वो। मेरे पास इनफ फ्लावर्स नहीं है। आई थिंक इस फाइट के लिए फ्लावर्स चाहिए होते थे। No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. ये बंदे से एक्चुअली फाइट करना बेकार है। इसकी एचपी बहुत ज़्यादा है। क्या इसका डैमेज बेस है क्या? उसका डैमेज तो कुछ होता नहीं है। ना के बराबर डैमेज हो रहा है। ओके Teamwork is dreamwork. The pinnacle of excellence. हिट कैसे हुआ मैं, बट एनीवे। स्किल इश्यू है इसका तो। Thunder! Element? Up to the freezer. आई थिंक इसकी लास्ट की बची हुई एचपी तो मैं मार ही सकता हूँ। नाइस। A meager haul. Still
Still, it'd be rude not to take it. It will be rude not to take it. Okay. You're back. Yes, I am back. We chased it off. You deserve a payment. Now I'll finally get the flowers back in field. Let's hope. Let's just hope no more inhuman visitors show up again. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम. मुझे लगता है कि उसको एक्चुअली फ्लावर्स अच्छे लगते थे, तो मुझको उसके लिए रिजर्व फ्लावर्स निकालने चाहिए थे. Huh. No traps, no poison smoke? How unimaginative. अच्छा हाँ, इनको फॉलो करना है ना, स्क्विरल्स को. नहीं फॉलो करना है इनको, वो करना है. ये रहा. ला. Huh. No traps, no poison smoke? How unimaginative. How वैसे नहीं बोला जाएगा ओवर. How unimaginative. काश लोइंग स्टैंडर्ड होता, फिर कॉन्स भी मिल जाते हैं. और उन्होंने पहले ही कंफर्म किया था कि वो नहीं है. अभी ये एरिया का एक्सप्लोरेशन हो चुका है. यहाँ पे थोड़े से रह रहे हैं शायद से इधर के आसपास, और फिर ये वाला आइलैंड है. पहले यहाँ के दोनों क्लेम कर लेता हूँ. ये ज़्यादा ठीक रहेगा यहाँ पे जाना, या फिर वो ज़्यादा क्लोज पड़ेगा. देखता है. स्वीट फ्लावर्स. एक चीज़ है, स्वीट फ्लावर्स कहीं भी दिखते हैं ना, मैं कलेक्ट करता चलता हूँ. स्वीट बादाम्स बनाने में काम आ जाते हैं. A dash of frosting. ओके, तो ये हिट नहीं करते इनको. At the ready. मैं तो राइडन के लिए फार्म कर रहा हूँ. नाइस भाई, निकालो राइडन. Wow, these will come in handy. बट तुम राइडन के लिए क्या फार्म कर रहे हो? प्रीमोजेम्स या फिर उसके लिए प्री फार्म कर रहे हो मटेरियल्स वगैरह? Utensils at हाँ, और कुछ करने लग गया. ठीक है. अरे यार, ये बॉम्ब्स लेके क्यों आते Off to हैं? the freezer. ऐसे सिचुएशन में मैं काफ़ी मिस करता हूँ कि मेरे पास
कोई वो करेक्टर क्यों नहीं है? वेट, उसने बोट भी तोड़ दी उनकी। हाँ, तो कोई भी टूट गया बेचारा वो। Anyway. Everybody stand back! फ्री फार्म नहीं, पर तुम टेक्निकली राइडन के साथ राइडन के लिए फ्री फार्म कर सकते हो, क्योंकि अगर राइडन अगर तुम्हें जस्ट इन केस नहीं भी मिलती है तो तुम उसके आर्टिफैक्ट सेट्स जो है ना, सर्वेट फेट ऑफ एम्बलम, जो भी नाम है उसका, एम्बलम ऑफ सर्वेट फेट, वो तुम बहुत सारे कैरेक्टर्स पे चला सकते हो। उसके लिए फ्री फार्म करना गलत नहीं होगा। उसके लिए फ्री फार्म तो एक्चुअली बढ़िया है। Huh. मेरे को No traps, no actually poison one of smoke. those How imaginative. voice license, क्या नाम है, वॉइस लाइंस सुननी है, वॉइस लाइंसेस नहीं मैं नहीं बोला जा रहा, what the fuck, there's something wrong with me today bro। मुझे one of those वॉइस लाइंस सुननी है लोरियन की, जो उसके डेथ एनिमेशन में आती हैं। आ गया फॉलन। So this is my limit. So this is the limit। I still haven't had enough. Wind, tell me why. Tell me why ain't nothing। ओके ठीक। मैं वो पता नहीं क्यों जब भी कोई ऐसा बोलता है ना, टेल मी व्हाई, मेरे को वही गाना याद आता है। Ain't nothing but a heartache, tell me why। Now that's my kind of opponent. Wind, tell me why. अभी 3 कैरेक्टर्स बिल्ड करने रहते हैं इसीलिए। I mean, मैंने तो वार्न किया था तुमको। इट्स नॉट लाइक कि मैंने तुमको वार्न नहीं किया था, मैंने तो तुमको अच्छे से बताया था। As someone who play multiple accounts and someone who have to build multiple characters in multiple accounts, it takes a lot of willpower, sanity and mentality to push through, and also it takes time, patience। I remember that day मैंने तुमको clearly बोला था कि you can pull Lohin and you've already pulled Moika, but तुमको याद रखना पड़ेगा ये चीज़ कि दोनों के लिए रेजन लगेगा। बट मैं बहुत खुश हूँ तीनों मिल गए। ऑफ कोर्स तीनों मिलने से खुशी होती है, बट मैंने तुमको बताया था, जैसे तुम अभी जिस टोन में तुमने बोला ना कि यार 3 कैरेक्टर बिल्ड करने पड़ते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि मैंने बताया नहीं, मैंने बताया था कि 3 कैरेक्टर बिल्ड करने पड़ेंगे अगर निकालोगे तो एक साथ, वो भी साइमल्टेनियसली। सोच रहा हूँ कि अगर जीवा या आर्ले का रीरन होगा तो राइडन ऑलमोस्ट कहता है आर्ले का रीरन आ सकता है। अभी तो मैं निकोल पे फोकस कर रहा हूँ। नाइस, जैसा तो मैं सही लगेगा। ये वाला ट्रायल करो पहले, या वो एक्सक्यूज रिमार्केबल चेस्ट लेकर आता हूँ ना पहले। मैं तो एक्चुअली जो ना एमिली का भी वेट कर रहा हूँ, अभी एमिली एक्चुअली है। इवन तो मेरे पास काफ़ी सारे डेंड्रो कैरेक्टर्स हो चुके हैं, मेरे पास कितने 3 डेंड्रो कैरेक्टर्स हैं, बट मैं स्टिल एमिली का वेट कर रहा हूँ। A little of this
मेरे को हिट कैसे किया भाई उसने? हाँ भाई, क्योंकि आर्ले होयो की फेवरेट, उसका रीरन आएगा, कुछ कह नहीं सकते। एमिली आई थी और क्रॉनिकल्स में, हाँ, बट अभी मेरे पास प्रीमोस नहीं थे, अभी भी नहीं है वैसे तो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अभी चाहिए उसका रीरन, मैं चाहता हूँ कि उसका रीरन एक्चुअली काफ़ी क्लोज हो, पर जैसे कि अगर नेक्स्ट फ्यू पैचेस के बाद अगर उसका रीरन होगा तो मैं शायद से उसको मैं उसको निकाल पाऊँगा। Even better than I imagined. It's my lucky day. क्योंकि अभी मेरे सारे रिसोर्स कोलम्बीना पे फोकस्ड हैं, इस साल तो नहीं होगा। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि वैसे भी कोलम्बीना पे पुल करना है, बट आई डोंट नो कि कोलम्बीना मिलेगी मुझे। इट्स हाईली अनलाइकली कि मुझे कोलम्बीना मिलेगी, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट कि मैं चाहे लास्ट 50-50 जीता था, क्योंकि लोहेन से पहले मैंने निकाली थी। लेट्स सी मैंने क्या निकाला था। ऑफ कोर्स हार्ड पिटी है, लाओमा, और आई थिंक लाओमा गारंटी थी। हाँ, मिजुकी मिजुकी, तो लाओमा गारंटीड निकाली थी, बट मैंने लोहेन पे 50-50 विन करी थी, इवन दो हार्ड पिटी थी। आई एम हैप्पी कि मैंने विन करी 50 एटलीस्ट, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे मिलने वाला है कुछ भी। मैं शायद कोलम्बीना पे वापस खाने वाला हूँ, पर अब मिल जाएगी वो भी 10 पुल में भी, बता रहा हूँ। इट इज़ हाईली अनलाइकली कि मुझे मिलेगी ऑनेस्टली। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अभी मैं अपने लक को अच्छे से पहचानता हूँ। Adventure time. Off we go. Even better than I imagined. It's my lucky day. मुझे 10 पल में लोहिन मिल गया, तो मैं भी मिल जाएगी कोलम्बीना। नहीं, बट वो लक का जो है ना, सबका डिफरेंट रहता है। मैं एक्चुअली वो चीज़ के लिए सैड नहीं हूँ कि मेरा लक अच्छा नहीं है, मैं बस क्या कहते हैं, मैं अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि देखो, अगर तुम क्या कहते हैं किसी चीज़ को एंटिसिपेट नहीं करोगे तो तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। जिसके होने का हाईली चांसेस रहते हैं। टाइम ट्रायल, गुड लक विद योर लिनिया गोल्स। आई थिंक कुछ लोग लिनिया के लिए पुल कर रहे थे यहाँ पे। Adventure time. भाई कॉमन चांस वर्थ इट है। तो मालूम है ना, कुछ एरिया में कॉमन चेस्ट एक्चुअली प्रीमोस नहीं देते। अच्छी बात है, जब तक स्कर्प नहीं आती लोहेन से आराम से चलाना पड़ेगा। हाँ, वो ठीक है, बट मैं तुम्हें पता है ना कि काफ़ी सारे एरियाज हैं जिधर कॉमन चेस्ट एक्चुअली कुछ प्रीमोस नहीं देते हैं। Off we go. अगर वो प्रीमोस देते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि कॉमन चेस्ट को फार्म करना पड़ता है। 3-4 नॉर्मल, हाँ, पुराने मैंने पूछा था कॉमन चेस्ट वर्थ इट है या नहीं। नहीं, कॉमन चेस्ट वर्थ इट नहीं है। बहुत सारे नए एरिया, पुराने एरियाज में कॉमन चेस्ट एक भी प्रीमोस नहीं देती हैं, और
डेफिनेटली वर्थ इट नहीं है, क्योंकि वो 1-2 प्रीमोस देंगी कितने, Goose on the loose. 70-80 चेस्ट खोलनी पड़ेंगी एक पुल करने के लिए। वर्थ इट तो नहीं लगता मुझे। The abyss is burning. Going in. एनीवेज, लोहन ऑलमोस्ट फ्री में दे दिया गेम ने। अगर अपनी बात कर रहे तो हाँ, बट मेरी बात कर रहे तो नो। मैं तो हार्ट बीट ही गया था। Hall. Still, it'd be rude not to take it. Let's fight. मेरे लिए तो फ्री है हाँ, बट मेरे लिए तो वो हार्ट बीट ही था ना भाई। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। $70 और 80, मुझे 80 पुल्स के आसपास मिला है वो। आई डोंट नो क्यों फ्री है। छोड़ो भाई, ये मेरी चेस्ट क्लेम कर लेता हूँ। A meager haul. Still, it'd be rude not to take it. ये वाली चीज़ क्या है? डिक करना है, डिक सीले, फॉलो सीले, नेक्स्ट बटन आई थिंक। ओके, अच्छा ये वो है तो उधर तक लेके जाएगा जहाँ पे एक स्पॉन कर देता है। बट ये है नए वाले एरिया की जो एक्सप्लोरेशन है मुझे अच्छी लगी, डॉल्फिन पोर्ट की भी और क्या नाम है इसका, टेम्पल ऑफ स्पेस की भी। टेम्पल ऑफ स्पेस की अगर मैं बात करूँ अभी तो मेरे आई मीन ये और ये तीनों एरिया 100% एक्सप्लोर हो चुके हैं। बीच का जो मेन आइलैंड है वो थोड़ा सा बचा हुआ था, अभी 84% पे है वहाँ। 100% हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लोहेन फिलर कैरेक्टर होता है काफ़ी, लोहेन फिलर कैरेक्टर होते हुए काफ़ी अर्निंग करवा दिया होयो को, लेकिन इस पे भी बहुत पुल करे हैं। इट डजेंट मैटर कि कोई कैरेक्टर फिलर कैरेक्टर है या नहीं है, जो भी है। जो भी कैरेक्टर्स होंगे गेंशिन इम्पैक्ट में वो अर्निंग करेंगे, क्योंकि उनका बेस प्लेयर जो उनका प्लेयर बेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। कोई ना कोई किसी ना किसी का तो कैरेक्टर चाहिए होगा। मुझे कैरेक्टर चाहिए था, मुझे ज़्यादातर ऐसे कैरेक्टर चाहिए होते हैं। Up to the freeze. Teamwork is dreamwork. Thunder! Element? We've none stay. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओह माय गॉड, ये तो मर्डर कर रहा है लोगों का। बेचारे फ्री भी नहीं हुए, मर्डर हो गए। आई थिंक वो रिस्पॉन्ड नहीं होंगे। Oh, I've never seen this before. आते बेचारे मर्डर हो गए फालतू में। Interesting. यहाँ पे चेस्ट है। Thunder! The abyss is burning!
trim. I won't judge. A meager haul. Still, it'd be rude not to take it. वाली चेस्ट ले ली थी क्या मैंने? रिमार्केबल चेस्ट ली थी क्या? स्ट्रीम में पीछे करके देख लेता हूँ। तो ये रिमार्केबल चेस्ट ही थी। ओके नाइस। एनीवेज मुझे भी क्रायो डीपीएस चाहिए था इसीलिए लोहे निकाला। गुड फॉर यू भाई। लोहेन बस्ट कॉप में अजीब दिखता है। मैंने नहीं देखा कभी वो। उसके पीछे रीज़न ये भी कि बहुत लोगों ने लोहेन पुल नहीं किया है। जॉल है कहाँ? लेकिन वो सेले है क्या यहाँ पर? वो सेले किधर गई? सेले वेट कर सकती है थोड़ा सा। मैं ज़रा चेस्ट लेकर आता हूँ। तो बॉम्ब है क्या कहीं पर? अब ठीक है बॉम्ब नहीं है। इसको मैं हिट नहीं कर सकता इधर से नीचे से। ओके क्लाइंब करना पड़ेगा मुझे। तब लोग ने उसको मार भी दिया है बट उसने ड्रॉप नहीं किया कुछ भी यार। रोहित ने मारा, डोरी ने मारा। It'd be rude not to take it. Try using Lohan in third person। अभी तो मुझे किसी चीज़ से ऑब्स्ट्रक्ट होना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पर मैं अल्ट करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लम्बा वियर्ड तो दिखता है। मैंने वो चेस्ट ले ली थी क्या? हाँ चेस्ट ले ली थी मैंने। नाइस। बैठ जाना है इसके अंदर। ओके तो ये हो गया। यहाँ पे चेस्ट है इधर बनेगा। He just grabs air and strike. I think limitations हैं। बहुत पुराना गेम है ये, अभी भी यूनिटी पे चलता है। मैं एक्चुअली चाहता था कि जो ये वाला रोइन गार्ड है ना, ये एक्चुअली फार्मेबल ना होता तो बेटर है। यो व्हाट्स अप भाई, क्या हाल है? नेक्स्ट बैनर 4 स्टार। मुझे नहीं मालूम अभी आए क्या वैसे उन्होंने नोटिस में तो कुछ आया नहीं। अभी तक तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। मैं तो चाहता था कि ये वाला रोइन गार्ड वो फार्मेबल ना बना तो बेटर है कि ये बैठा हुआ यहाँ तो फील लगता है भाई। Teamwork is dreamwork.
मैंने क्रायो अप्लाई नहीं किया, मैं फिजिकल अटैक कर रहा था बहुत यार। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? गेंशिन ने अभी तक 4 स्टार रिवील नहीं करे हैं, कोई चीज़ अभी तक स्ट्रीम नहीं आई है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। Mondstadt really is the place to be. Can't wait to get my hands on some apple cider. Anyways, यहाँ पे चेस्ट थी, मैंने क्लेम, यहाँ पे मैंने चेस्ट क्लेम करी क्या कोई? तो याद नहीं। मुझे लगता है कि बेटो डायना शार्लेट देखा जाएगा भाई। यहाँ पे एक चेस्ट होनी चाहिए, चेस्ट है कहाँ पे? अच्छा नीचे है। A dash of frosting, a burst of flavor. लोगों ने अच्छा है, डिपेंड करता है कि तुम्हारी डेफिनेशन क्या है अच्छे होने की। अगर तुमको क्या कहते हैं एक ऑन फील्ड सब डीपीएस काइंड ऑफ ड्राइवर चाहिए, जो लोगों पे सब डीपीएस पे रिलाई करता है, देन आई गेस हाँ लोगों ने अच्छा है। बट अगर तुम्हें एक हाइपर कैरी कैरेक्टर चाहिए देन नो। डोरी क्या कहते हैं, लोगों ने एक हाइपर कैरी नहीं है। Still, it'd be rude not to take it. ओके ये वाला हो गया अभी। लो इन फन है, एंड आई थिंक वो इनफ रीजन है। अनलेस कि कोई कैरेक्टर एक्सट्रीमली बैड होता है, आई डोंट थिंक सो कि ये गेम के अंदर कोई बुरा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है इतना। अनलेस कि तुम डोरी की बात करोगे तो ना, डेया, डोरी, मिजुकी, वो आई मीन प्रीटी मच सबको पता ही होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कैरेक्टर उतने अच्छे होते नहीं हैं। अगर लोग कंपेयर करेंगे इसको डेया से, देन दे आर रॉन्ग। ये डेया से काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। प्रॉबेबली बिकॉज उसके पास क्रायो एलिमेंट है। अगर वो किसी और एलिमेंट को बिलोंग करता तो शायद से नहीं, मैं ये चीज़ नहीं बोलता। बट क्रायो इन इटसेल्फ काफ़ी अच्छा एलिमेंट है। हर जगह बो क्यों चाहिए होता है? At the ready. और कहाँ पे? अभिष भाई लोकल लेजेंड मारने हैं। हाँ अभिष भाई तुम्हें चाहिए तो तुम आयुष भाई के वर्ल्ड में जाकर मार सकते हो। Wow, these will come in handy. अभी ये हो गया। चलो एम्बर को पार्टी से निकालते हैं रियल क्विक, बिकॉज एम्बर क्यों रखनी है मुझे पार्टी में, इवन दो कि बस C2 एम्बर है, जो कि मैंने बाय करके नहीं निकाली। C2 मेरे को मिली है समहाउ। C2 मून वाले रीजन में 2K अराउंड मिलेंगे। आई डोंट वांट यू टू टॉक अबाउट लीक्स आयुष भाई। मैं रिमूव कर रहा हूँ ये कमेंट तुम्हारा। अगर स्पेकुलेशंस हैं तो उसको स्पेकुलेशन बना के बोलो कि मुझे लगता है ऐसा। Hey, और अगर तुम there's कहीं से something लीक्स निकाल के strange लाए हो over तो there. नहीं, Come on, let's take a look. मुझे लीक्स नहीं चाहिए। अपेरेंटली मैंने सुना है कि ये अपने लीक्स वगैरह को काफ़ी स्ट्रिक्टली लेता है। Ready to spice the...
ये बिगी चल को भी तो मारना पड़ेगा शायद से। नहीं, वो स्पेसिफिकली डिफरेंट केस होता है उसका, डिपेंड करता है कि किस तरीके की है। The spoils of war. Let's see what's inside. डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के लीक्स हैं। डेफिनेटली उसके साथ पुरीना के एको कब आएंगे पता नहीं भाई, एक दिन आ जाएगा। Being a captain takes more than just captain grade strength. The most important thing is, I don't know. If I did, I'd. Off to the freezer! Devouring claw! Element. बट फॉग में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं ना, अनफॉर्चुनेटली। This. कोऑप में मज़ा तो आता है बट अनफॉर्चुनेटली कोऑप में ज़्यादा कुछ करने को होता ही नहीं है। ऑन अपडेट इन पीसी लगाओ क्या टाइमिंग है, Spoils of हमारा ऑटो war. अपडेट नहीं होता क्या? Let's see what's inside. ओह, एपिक सीली है। ये कैसे होता है? डू यू रिमेम्बर द टाइम व्हेन यू ओके ठीक है। ये सीली अनलॉक हुई कैसे? बट मैं पहले यहाँ से चेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद में हम सीली को फॉलो करेंगे। कहाँ पे है ये चेस्ट? वेट अ मिनट, यहाँ पे चेस्ट नहीं है। मैंने ऑटो अपडेट बंद कर रखा है। ओके मैं लेजेंड फाइट करनी मैंने भी ये कहते हैं लोकल लेजेंड, तुम ज्वाइन कर सकते हो आयुष भाई को, वो लोग कर रहे हैं बैठ के। मैं अभी करंट एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ। यार यहाँ पे एक चेस्ट थी यार, अगर ये वाली चेस्ट में क्लेम कर चुका हूँ, बिगी चर्स वाली। पॉट के राइट साइड में है ना, यहाँ पे। ओके वेट अ मिनट, मेरे को शायद स्ट्रीम में पीछे जाके देखना पड़ेगा कि मैंने क्लेम करी है नहीं करी है। तो ये वाली चेस्ट में क्लेम कर चुका हूँ। Mondstadt really is the place to be. Can't wait to get my hands on some apple cider. आई थिंक कल ज़्यादा ग्राइंड करने की वजह से और मैं कुछ हफ्ते से स्लीप डिप्रिवेशन हो रही है मुझे, तो शायद मैं भूल रहा हूँ। यूज़ कंपस की बात नहीं है, मैं आई थिंक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्लीप पे रन कर रहा हूँ अपने आप का। मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। हाँ मैंने क्लेम कर लिया। ओह माय गॉड भाई, मैं चीज़ें क्लेम कर रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ये वाला वो कर लेता हूँ। आई थिंक अभी मुझे क्या कंपस की ज़रूरत पड़ेगी, मेरा एक्सप्लोरेशन कब का कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये वन ऑफ द लास्ट चीज़ों में से एक है जो मैं क्लेम कर रहा हूँ। जिन्होंने करेक्टर टीज़र देखा नहीं, मैंने एक्चुअली नहीं देखा। सही याद दिलाया, उसके एक खोया फिर में वीडियो आई है डे इन अ लाइफ ऑफ सिंड्रो ने, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में बैठ के, ये कंप्लीट करने के बाद में। मुझे देखनी है यार, प्लीज़ मेरे लिए कोई स्पॉइल मत करना उसका।
पार्टिकल्स नहीं है ये अभी, बहुत पार्टिकल्स नहीं है। हाँ क्या होगा। A meager haul. Still, it'd be rude not to take it. एक वीडियो आई थी होयो फेयर के ऑफिशियल चैनल पे, जो होयो फेयर वाला चैनल है उनका, उन पे उस पे उन्होंने डाला था डे इन लाइफ ऑफ सिंड्रोनिया। वो मैंने देखा नहीं है अभी तक। मैं कल रात को जब भी बैठ के थोड़ा बहुत यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहा था तो मैं सोचा अभी नहीं देखूंगा, कल देखूंगा। अभी मैं थका हुआ हूँ कोई काफ़ी देर का, तो मैं शायद फोकस भी ना कर पाऊँ सारी डिटेल्स पर। अरे नहीं, मैंने टीपी क्यों किया हूँ? नो, मैंने सीढ़ी नहीं लेके आया, सीढ़ी अभी भी वहीं पे है और वहाँ पर टेलीपोर्ट वे पॉइंट नहीं है, मुझे चल के जाना पड़ेगा वापस से। Why did you do this to me? The seasons have changed. ओके, एक चीज़ है मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में, एक चीज़ हो चुकी है कि मेरे को सोने की ज़रूरत तो है, क्योंकि मैं ऐसे डेली 3-4 घंटे की नींद पे नहीं जी सकता था। तो प्रॉब्ली आज कोशिश करूँगा कि आज 10 ओ क्लॉक या तो 10:30 या फिर अराउंड 11 ओ क्लॉक सो जाऊँ जाके। यूज़ बाइक मेरे पास मॉवी का नहीं है। और अगर तुम कल की स्ट्रीम देखोगे मेरी, तो मैंने सैनिटी लूज़ कर दी थी मोविका को पुल करने के लिए और मैंने गिव अप कर दिया मोविका पे। पहले अंदर वाले से डील करते हैं। नहीं, दोनों एक साथ एक्टिवेट होते हैं फॉर सम रीज़न। A little amuse bouche. The pinnacle of excellence. Goose and a loose. Going in. Adventure time. Leave none stay. ओल्ड स्कूल एसेंशियल्स। कहाँ पे गिरे ये ड्रॉप? ओह एक्चुअली उन्होंने ज़्यादा ड्रॉप दिए रूइंस वाले। हाँ, 6-6 केओस कोर्स मिले भाई यहाँ से। मैं नहीं भूल The सकता spoils of war. Let's see what's inside. एक बार होती है तो मैं भूल जाता, दूसरी बार होता मैं एक बार भूल जाता, थर्ड टाइम इट इज़ टू मच भाई। अभी तक ये एक्सप्लोरेशन पूरा हो चुका है। आई थिंक इसको मिला के अपना गवर्नमेंट पोर्ट का एक्सप्लोरेशन, हाँ 79%। अभी थोड़ी सी चेस्ट और हैं थोड़ी चीज़ अंडरग्राउंड एरिया में। आई थिंक वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे किसी दिन। अभी के लिए अपना 80% कंप्लीट हो चुका है, तो हम अपना रिवॉर्ड ले लेते हैं, लिमिटेड टाइम रिवॉर्ड्स। अभी क्या रह गया है? इवेंट हो चुका है, सीजन से रिवॉर्ड निकाल चुका हूँ मैं, वो वाले प्रीमोजेम्स वाले। स्टोरी क्वेस्ट करनी बाकी है ये वाली। आई थिंक ये मैं किसी दिन ऑफ स्ट्रीम करूँगा, क्योंकि आई थिंक 2 बार स्ट्रीम कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। यार ये चेस के बॉट ही नहीं है यार, ये फिर कोई प्रो बैठे हैं जो बॉट के नाम पे। नहीं भाई, वो ट्रेंड होते हैं वो, जैसे अभी एआई है ना, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन करे जाते हैं। तो वो चेस के जो बॉट्स हैं ना chess.com पे, तुम उनको ऐसा नॉर्मल बॉट्स मत समझो। वो लिटरली उनको जितने भी ग्रैंड मास्टर्स वगैरह उनके गेम का जो डेटा लिया है और उनको फीड किया है। तो तुम अगर उनसे चेस खेल रहे हो तो ज़्यादातर तुम किसी हाई लेवल ग्रैंड मास्टर के अगेंस्ट ही खेल रहे हो, उनसे विन करना बहुत हार्ड होता है, अनलेस कि कोई बग अब्यूज़ करते हो तुम। क्योंकि ऑफ कोर्स तुम एक रियल पर्सन के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो, बॉट के अगेंस्ट खेल रहे हो, और बंच ऑफ कोड्स को बस क्या कहते हैं चीज़ किया जा सकता है। तो बहुत सारे बॉट्स हैं ग्रैंड मास्टर जिनका एक चीज़ वे होता है,
क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बेसिस पे अपने मूव्स कैलकुलेट करते हैं। अगर तो उनके लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कुछ भी फ्लॉ होगा तो तुम उनको बीट कर सकते हो इजीली एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गेम्स में। अरे वो तो जो है हर बार गेम में कोई जो पीछे में गलती गलती किया वो नेक्स्ट गेम में कर रहा है। नेक्स्ट वेट व्हाट? हर गेम के बाद में जो पिछले गेम में गलती की थी वो नेक्स्ट गेम में भी कर ही नहीं रहा वो। हाँ तो वो एक वो बॉट है ना, तो वो इवॉल्व हो रहा है, वो गेम प्ले के साथ अडेप्ट भी करता है। आई डोंट नो भाई, चेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मेरे को नहीं मालूम। लोहेन की स्टोरी पोस्ट भी करनी है तो ठीक है। तो अभी हमारे पास करंटली गोल है कि पहले तो हम जाके अ डे इन अ लाइफ ऑफ सिंड्रोने देखेंगे, बिकॉज व्हाई नॉट। फिर उसके बाद में हम लोहेन की स्टोरी क्वेस्ट करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू अदर अकाउंट्स। How do I get along with the other knights? Well, I'm और certain एक I've left नया a भी deep डाल दिया impression. उन्होंने। That can only be a good thing, right? गॉड, एक नई चीज़ भी आ चुकी है अभी। पहले तो हाँ, 7 से 8 गेम्स साथ में खेलने के बाद 40 से 50 चल रहा है। मेरे को नहीं मालूम भाई तुम किस बारे में बात कर रहे हैं, आई डोंट रियली नो। ओके तो पहले इन्होंने ये डाला है। अभी तक पहले तो ये आया था आउटफुट टीजर्स वगैरह, वो हम लाइव स्ट्रीम में देख चुके हैं, तो पहले ये देखते हैं अभी करेक्टर टीजर। Happy Fontanalia Festival, mademoiselle. Your coffee. Enjoy. Still your drink of choice, then. Hands-on engagement during research is an integral part of social learning. You taught me that, Alain. Besides, this used to be your favorite too. The taste reminds me of home. Happy Fontanalia Festival. Come again. You hate high heels that much? बार बार क्यों डाल रहे हैं इसको? ये क्यों ये अपने फेस पे बार बार इस चीज़ को रब इन करते हैं कि यू नो दिस कैरेक्टर ला सिग्नोरा रोजली, यस शी इज डेड, तुमको नहीं मिलेगी वो खेलने के लिए। नॉट इवन गेम में बॉस फाइट मिलेगी तुम्हें बस उसकी, तुम आगे उसको स्टोरी कंटिन्यू भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इनाजुमा में लेके जाएंगे तुमको और उसको वहाँ पे मार देंगे, ठीक है, इजी। वी डोंट केयर कि तुम्हें वो कैरेक्टर पसंद है या तुम्हें वो अच्छी लगी थी या तुम्हें उसका डिज़ाइन अच्छा लगा, तुम उसकी स्टोरी के बारे में जानना, वी डोंट रियली केयर। हम उसको मार देंगे और फिर उसको मारने के बाद भी वो एवरी सिंगल टाइम कोई मौका छोड़ते नहीं है किसी प्लेयर बेस के फेस पर रब इन करने के लिए कि ये मर चुकी है। बार बार क्यों डाल रहे हैं इसको? क्यों रिमाइंड करा रहे हैं हमको? क्या चाहते हैं ये लोग? You're grating nuisances. I can't stand them. And how do you even fight in a dress like that? The length alone is ridiculous. A lady can be elegant and deadly at the same time, you know. The two often go hand in hand. You'll understand when you're older, I'm sure. I won't, and I don't want to. Let's go, Paloma. I almost forgot. Even you're no longer by my side.
Polonia. Oh no भाई. क्या मुझे रीजंस दे रहे हैं क्या ये सिंड्रोने को पुल करने के? एटलीस्ट यू हैव कोलंबिना. ऑफ कोर्स ट्रैवलर को बताया था कोलंबिना ने कि वो ठीक है तो फाउंटेन ट्रैवल करने जाएगी. I can't see them yet. I have to resolve my own questions first. Sandrone. ऑफ कोर्स right. मेरे पास यामी को नहीं है. मुझे क्यों रीजंस दे रहे हैं ये लोग सिंड्रोने पुल करने का? ये भी देखनी तो थी. और या फिर वाली डे इन लाइफ ऑफ सिंड्रोने. I'm sorry, Marionette. वेट तो उसकी की डिटैचेबल है. Lady Sandrone, I'm sorry to bother you, but we've got a major problem. Azarav? You better hope that whatever you call a major problem is worth disturbing my morning peace. I'm terribly sorry, my lady. Disappear before my patience runs out. Yes, my lady. Polonia, एक सेकंड बस शेड्यूल को फिक्स कर देता हूँ. हाँ ठीक है. assess the damage. Energy circuits fried, main shaft warped. Truly a brilliantly foolish way to destroy things. Ugh. Still need to request a budget for the extra components. Thank you, Miss Sandrone. I'll be especially careful with the equipment from now on. Thanks to you, I still have to make a trip to that man's office this afternoon. I'm really sorry, Lady Harbinger. You haven't paid yet. Another annoying one. All right, I've got this. You just stay out of it. You don't even know how to apply for reimbursement, and you dare come out to eat by yourself? From now on, put her bill on my tab. It's all the same when it comes to reimbursement anyway. Sorry. Huh? I didn't do this just to hear you apologize. You're not angry with me? Why? Isn't this just who you are? What sort of questions are these? I've been running around all day and it's absolutely infuriating. रेज वेट करती है भाई कोलंबिना. Nothing. Let's go eat together next time, Sandrone. I like seeing you handle the reimbursements for me. Oh my god भाई. Barcelona, review this. भाई I can't wait to see. मुझे तो एक्चुअली कमेंट्स देखने हैं भाई. लोग जो शिपर्स हैं जो शिप कर रहे हैं कैरेक्टर्स का वो क्या कमेंट्स कर रहे हैं. And run for the way NPCs. Colombina non subscriber. Okay. मुझे कुछ ज़्यादा कमेंट्स दिख नहीं रहे यहाँ पे बट Neandron cameo is welcome surprise. Neandron क्या होता है? So why hasn't the funding for my last project been released yet? It seems your research is always fraught with unexpected losses, my dear colleague. A budget of this scale requires more data to justify its long-term value. Value? My technical research is the value. Are your eyes really fixed only on next quarter's financial report? The more in hand is always more tangible, isn't it? Neandron है. इसकी बात कर रहे थे लोग.
I'm sorry, Sandrone, but such caution is necessary. Enough! I don't want to hear the word sorry once more today. Everything about today is utterly ruined. Not at all how a birthday should feel. Oh, birthday उसका. What is it now? Happy birthday, Sandrone. I don't recall sending out any invitations. And besides, all you'll find here is the smell of machine oil. But I like the offerings Arlecchino brought for you. Offering? Never mind. Offerings. The water for the tea's too cool. Polonia's heat sensor needs recalibration. You're all just here to pick fights with me today, aren't you? I must say, Rosalind, your standards for technical details have certainly risen under Sandrone's influence. As for me, I think the tea tastes perfectly fine today. You do have taste, Arlecchino. And you, Sandrone? You look a little weary. Looks like I'll need extra rounds of data cleanup before bed. Why not try my method? Have a few more drinks. Taste what I brought. In Mondstadt, a birthday is meant to be enjoyed to the fullest. Enjoy? Is that like a command to be happy on your birthday? Not exactly. Perhaps it's more like a reason the world gives you to accept others' intentions without apology. I can pick my own reasons for days like that. Stop fussing. If I don't drink soon, some Mondstadt native will start complaining about the temperature. I wonder कि कितने लोग actually इस चीज का gift बनाएंगे. For days like that. इस चीज का. Stop fussing. If I don't drink soon, some Mondstadt native will start complaining about the temperature. Cheers. Cheers. Can I have a birthday too? If you wish it, you may have a birthday. Most people cannot choose their birth date, but you can. You are free. I'm sorry, Marionette. The cake is not exactly what I had in mind. Why apologize? It's already perfect. You're right. Happy birthday, Marionette. Wait, तो old man उसको marionette बोल रहा था. उसका marionette उसका real name है. या फिर मुझे लगा था कि marionette उसका फटुई name है. कि जैसे कि Damselat उसका प्योर फटुई नेम है और उसका कोलम्बिना कोड नेम है. तो मुझे लगा कि सिंड्रोने कोड नेम था और मैरिनेट उसका फटुई नेम था, बट अपैरेंटली शायद से मैरिनेट उसका रियल नेम है. Though it hardly matters whether it's sunny or snowing in Snezhnaya. It snows every day anyway. At least the people here aren't always so annoying. Sorry, Sandrone. Next time I'll bring you a birthday gift too. Or perhaps you'd prefer that I sing for you? Forget what I just said. ना ये हंसी अच्छी नहीं लग रही मुझे रोजलिन की. Anyway. Okay, wait. गेम ऑडियो ऑन कर देता हूँ. मैं बस भूल गया था. To be. Can't wait to get my hands on some apple cider.
captain takes more than just captain grade strength. The most important thing is... I don't know. If I did, I'd be a captain by now. How do I get along with the other knights? Okay, so- Well, I'm certain I've left a deep impression. That can only Let's be see. a good thing, right? मैं ज़रा 2 सेकंड आया. Mondstadt really is the place to be. Can't wait to get my hands on some apple cider. Being a captain takes more than just captain grade strength. The most important thing is... I don't know. If I did, Yo, I'd be a captain by now. Let's see. Exploration हो चुका है. परचेज हो चुकी है. I think अभी हम इसकी स्टोरी क्वेस्ट कर सकते हैं. Let's see कितना टाइम लगेगा. Hopefully ज़्यादा टाइम ना लगे. We will see.
in here. Prepare a few more strings of colored flags. As for the celebratory wine, I'll do the quality check in person. This is our first award ceremony since the Expeditionary Force's triumphant return. We're looking to put on a show, you hear? Leave it to us, Captain Kaya. Oh? The Honorary Knight and Paimon. Well, this saves me the trouble of sending someone to invite you. I'm sure our colleagues from the expedition will be delighted to see such prestigious guests in attendance. The knights are giving out awards? Well, I'm sure you know how many knights bear unique titles, yes? Take the Grand Masters Boreas or Captain Eula's Spindrift, for example. Some they inherit. Others have unique origins. But in the vast majority of cases, they are titles conferred to honor said knight's conduct and achievements. ओके लेट्स कंटिन्यू पहले देखते हैं क्या मिस आउट कर दिया मैंने ओके You could say that. Shame we were so busy with the issue of Dvalin's corruption back then, or we'd have held a ceremony for you too. Let me think. Why don't we make it up to you this time? Besides, isn't this ceremony meant for the knights who are back from the expedition in triumph? We wouldn't want to steal their thunder. Plus, being honored guests is way more impressive than actually receiving a title. You know, makes us sound like big shots. Is that so? In that case, I'm looking forward to seeing you at the ceremony. ऑटोप्ले ऑफ क्यों हो गया By the way, who's getting titles this time around? Mostly those who've made outstanding contributions during the expedition. Winfried, Leifhelm, and Lowen, Vice Captain of the 5th Company. Wait, Ham? You mean he doesn't have one yet? If it were just a question of personal ability, he'd have received a title before the expedition even started. But he hasn't been with us for very long, and, well, let's just say there are personal reasons for the delay. Word is that he'll not only gain a title, but also official command over 5th Company. Why, by my count, he's even set to break a certain someone's record. The youngest captain of the Knights of Favonius, of course. The previous record holder was our former cavalry captain, Dialuk. I wonder what face our former captain will make when that happens. I'm guessing he wouldn't make any faces. I wouldn't be so sure. He smiled oh so brilliantly the day he set that record. A smiling champion of justice, huh? Yeah, nah. Paimon can't see it. Well, let's not dwell on that. Care to guess what title our dear Vice Captain Lowen will receive? Oh, we're playing the name game. Gotcha! Easy! So, Lowen...
Your skills are fading, Paimon. Nuh-uh! This guy's just hard to sum up! Anyway, what's his title gonna be? I'd say most signs right now point to the Benevolent Knight. Benevolent? How's that even slightly associated with him? Long story. Alas, it seems someone has come looking for you. Honorary Knight! Honorary Knight! Thank goodness you're actually here! The Grandmaster would like you to come to the Knights of Favonius headquarters. He says he has important matters to discuss. Varka? What important business would he have with us? Maybe he want to sneak out for a drink. Paimon can't say she'd be surprised. But it's not like he's never serious, so maybe something really has come up. Talk to you later, Kaya. See you later. Remember to attend the ceremony. ये मैंने पहले करी है क्या ये फर्स्ट? I don't know कि मैंने करी है कि नहीं. Any questions about the award ceremony arrangements? Perhaps. Are you even listening? Okay, no objections. Lowen! Huh? Oh, yeah, can I go now? Yeah, thanks a lot, Grandmaster! Hey, get back here! What is it with you young people these days? When I first earned my title, I was so excited I couldn't sleep a wink all night. Huh? Oh? And how many barrels of wine did you guzzle while counting sheep? That's not the point. Forget it. I know you're not interested in a knightly title, or the position of captain. But it's Adorno's final wish to have you inherit the title of Benevolent Knight before he officially retires. You've been back in Mondstadt for a while now, and you're usually stationed at Dornman Port. Have you not thought about going to see him? Hey, there have been too many reports to file since our return from the expedition. I haven't been able to find the time. Oh. Odd that the handwriting on the reports you've submitted looks rather like Gunther's, wouldn't you say? Can't even handle a little paperwork. He still needs more training. Anyway, go have a good talk with Adorno. We'd like a smooth transition for both the title and the position of captain. Consider this a direct order from yours truly, the Grand Master, so don't go using work as an excuse, you hear? Don't look so worried. I have a rough idea of the agreement you two made before the expedition. If you need someone to cover for you... I mean, considering Adorno's special circumstances, I can make an exception and go with you. Forget it. You two have worked together for so long, he'd see right through you with a glance. True. And besides, I've got other matters to attend to. Is there anyone else you can take? Traveler, of course. Someone convincing, but not too close to Adorno. Do we have such a knight here in Mondstadt? That knight you speak of has just arrived. Oh no भाई यार हमको इनफ क्रेडिट नहीं दिया जाता भाई ट्रैवलर को इनफ क्रेडिट नहीं दिया जाता इतना काम वो उससे कराते हैं So is that why you borrowed Varka's name for summers here? I was troubled, I tell you. But then, I just happened to see you two walking by from the window. This must be the Animo Archon's guidance, don't you think? Not at all. Paimon's not sure what's going on yet, but you just want us to help you scam someone, don't you? Oh, no, not at all. Honesty is a knight's badge of virtue. I
I'd just like you to play the part of my friends. And corroborate some of the expedition's events while you're at it. Relax. If I say a single lie, feel free to punch me, alright? Wait, there's a ton of problems with that. We didn't even meet up with Varka until the very end of the expedition. And we didn't run into you in Notcry either. Alright, speaking of friends, I've heard tell of a certain friendly custom. The friendship fee. Here, I insist. ब्राइब कर रहा है भाई हमको फ्रेंडशिप फी what kind of custom is that what kind of friend you're talking about but पाइमोन की आंखें देखो भाई मोरा को देखते हैं That's a lot of friendship. I receive an allowance for special missions. Guess it all piled up before I knew it. I don't really have any use for so much money, so why not give it to a friend? You know, we could always do with another friend. Don't you think? what about those problems you mentioned Problems are meant to be solved. For the sake of friends. I'm starting to wonder who's this guy. Setting aside whether we're doing this for a friend or friendship fee. Adorno the Benevolent Knight, Captain of the 5th Company, and my direct superior. Benevolent Knight? Wasn't that... The knightly title I'm about to inherit? It seems that's the rumor, but in truth, he and I made a pact. In return for recommending me for the expedition, he hoped I, in turn, would reflect on what it truly means to be a virtuous knight while I was away. Once it was all over, I'd then inherit the title Benevolent Knight from him, as well as the position of captain. Wait, does that mean you aren't confident you can get his approval and that's why you want us to go along with your little show? Don't get me wrong, I have no interest in titles or positions. I'd just rather not listen to his nagging. Did he not join the expedition himself? Oh, he'd have loved to. He's a real veteran of Varka's campaigns. Wouldn't have missed that show for the world. If age and strength were still on his side. But I imagine it is now his final wish to find the benevolent title a home. Is that so? Then we'll... I knew that would do the trick! Off we go then, to Dorman Port. Hey! How much of what you just said was true, huh? You sure you're not out to scam this Adorno guy? The situation in Sumeru is as described above. It is time to eliminate the remaining poison Dottore has left in Mondstadt. Eric, Ursa. It's been a while since I last heard those names. I can feel a headache coming on. Wait, तो वो फ्रेंडशिप फी पाइमोन को नहीं दी उसने अपने पास क्यों है वो ओके इधर नहीं है लोहेन फ्रेंडशिप फी a hairy pouch opening shimmering golden whatever consumable item. I think I would rather not do that. डॉर्मेंस बोल्ट में मुझे लगा ऊपर है
old man. Still kicking, I see. Huh. Didn't buy the farm during the expedition? Thought you might have fallen into some pit somewhere, what with how long it's taken you to come see me. You worry too much. When it comes to pits, I've been the one doing all the digging and burying. Who are these two? My friend, the honorary knight, and her guide, Paimon. Honorary Knight. The same one that resolved the Storm Terror incident. मॉवी कमली नहीं, मैंने गिव अप कर दिया उसमें. मैंने 80 पीटी हिट करी एंड यू नो व्हाट, लास्ट में क्या कहते हैं निकोल पे पुल कर रहा था तो 87 पे मैं टिग्ना रिसीवन से हारा था और फिर अभी मेरी पीटी वापस से 80 पहुंच गया तो मैंने गिव अप कर दिया उस पर. आई वुड रादर नॉट पुल हर. Oh, she didn't just resolve that incident. She helped us complete the expedition. The Wild Hunt, the Doctor, Andreas. She played a part in dealing with all of them. Oh? I've quizzed the knights at Dornman Port about what happened during the expedition. Unfortunately, for some reason, none of them were willing to tell me the whole story. It's almost as if someone told them to avoid me. Lowen, is that your doing? Since we've got a moment, let's have a proper chat. गाचा में ऐसा ही होता है, जब चाहिए होगा जल्दी मिल जाएगी, जब चाहिए जल्दी मिल जाएगी तब नहीं मिलती. I suppose it's because we both possess a chivalric spirit that shines as bright as Mora. Isn't that right, Paimon? मुझे वैसे चाहिए नहीं थी honestly. I've been keeping my promise to you, you know. For instance, I've been organizing group training sessions with my fellow knights every week to build ironclad trust between friends. All right, the team building I told you about. Great way to foster trust and chemistry. As for this week's training plan... Drugging the wines one night in advance. Oh, my stomach! My stomach! Secretly swapping teammates' ammo. What sorcery is this, huh? What do you mean there are no bullets in your gun? Digging traps in the training ground. लम्बा हुआ है. आजकल 75 सॉफ्ट पिटी नहीं है, 80 प्लस सॉफ्ट हो चुकी है. ऐसा नहीं है भाई. अब मेरे को एक बात बताओ, 80 प्लस सॉफ्ट पिटी हो कैसे सकती है अगर 90 गारंटेड है तो? मुझे अभी तक समझ में नहीं, अगर 80 प्लस सॉफ्ट पिटी कोई कैसे कंसीडर कर सकता है अगर 90 गारंटीड ही है तो? उस पॉइंट पे तो वो पिटी हो जाएगी, सॉफ्ट पिटी हार्ड पिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा. Remember this well. Once you're on the battlefield, the only one you can truly trust is yourself. And so, to ensure the absolute safety of my friends, I went out every night, eliminating potential threats around our stronghold. Vigilance and reconnaissance are indeed things a company captain नहीं, needs काफी to लोग pay हैं भाई जिनको attention 10 पुल में मिल रही है चीजें. Vigilance, reconnaissance, it's so much trouble. And for what? Enemies who disappear quietly won't disturb anyone's sleep. Smart. I mean, gacha games वही होता है, चांस होता है बस. एक मिनट, ट्रायल लो है ना, इसका मतलब कि सिग्नेचर एंड कॉन्स्टलेशन 3, बट सिग्नेचर R1 है. वेट अ मिनट, तो टेक्निकली ये स्टार्ट स्टिक भी नहीं है क्योंकि 22 से क्रेडिट मिलता है बस इससे. तुमको क्या ये भाई, ये लोग अंधे हैं क्या?
इन लोगों को मैं दिख नहीं रहा। Have you heard? There's a strange guy wandering around these parts. I heard. We've lost lots of comrades at his hands. ये ग्लो क्यों कर रही है? He must have a death wish messing with the up pretty sneaky. Looks like we're in for a tough. वो ग्लो क्यों कर रही थी? मारने का क्राइटेरिया है। I don't know भाई क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, बट वो ग्लो कर रही है, ऐसा क्या है? All opponent defeated. Prevent any enemies to raise alarm. तो मैं बस उसको फ्रीज करके निकल जाऊँ ऐसे। ओके नहीं, उसका रेंज है। तो मैं इनके बगल से चल के जा रहा हूँ, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सीक्रेट टेक डाउन करना है क्या? ओह सीक्रेट टेक डाउन करना है। वो जो लोग साथ में हैं उनका क्या? ओह नो, वो इतनी देर से देख रही थी मेरे को और कोई साउंड क्यों भी नहीं आया गेम से। ये ना हुआ था भाई। इसको 2 लगते हैं क्या? वेट अ मिनट, वो मर नहीं रही वो। अच्छा तो उसको शायद नहीं मार सकते। बस्ट यूज करना है तो क्या हो, एलिट एनिमीज पे बस्ट यूज करना है। तो बस्ट तो रिचार्ज, अच्छा 2 पे बस्ट आता है। ओके एलिट पे वो बॉस पे बस्ट यूज करना, समझा। और वहां पे 3 लोग हैं। ठीक है तो No fairy tale ending for you. Nighty night. वो वाला एनिमी सस्पिशियस नहीं होगा अगर वो चल के चला जाएगा तो। भाई ये लोग एक्चुअली अंधे हैं। ये किस तरह का स्टेल्थ मशीन है भाई ये? Have you heard? There's a strange guy wandering around these parts. I heard. We've lost lots of comrades at his hands. Where'd he even come from anyway? He must have a death wish messing with... Oh, there. Much quieter. भाई कैजुअली बस लोहेन घूम रहा है और ये जेनोसाइड कमिट कर रहा है। भाई ये कर रहा था किसी ने लूना 7 के आर्कॉन क्वेस्ट में सेव पॉइंट का ऑप्शन। हाँ हमने 2 लोकल एजेंट्स मारे। नाइस भाई, प्रोग्रेस ब्रो, प्रोग्रेस पॉक चैम्प जो भी चीज़ है वो किसी को मालूम है वैसे पॉक चैम्प होता क्या है? यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा मेरे को। Haven't you smoked that little... Enough messing about. Time to wrap this up. Those meddling knights. Will they ever stop getting in our way? People who can't stop yapping. मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मेरे को वन ऑफ दोस गेम्स की याद दिला रहा है जो पहले गेम्स में स्टेल्थ मिशन हुआ करते थे ना। Why, if he ever falls into my hands, I swear I'll... हाँ उसने मुझे, ओके भाई वो बॉक्स के पीछे से कैसे देख सकता है? ठीक है तो जल्दी करना पड़ेगा मेरे को। मुझे चीची कब मिलेगी कौन जाने भाई। चीची कोई गारंटीड कैरेक्टर नहीं है, वो रेयर कैरेक्टर है।
all in a day's work, you know? एटलीस्ट लिमिटेड बैनर पे तुम पुल Of करके निकाल course, सकते in हो, order चीची to को वहां से gather निकालोगे। intel for the expeditionary force, I also needed to maintain my connections at all times and communicate earnestly with my friends. I didn't expect you to have matured so much from one trip. चीची तो कहीं गारंटीड नहीं है। Sprinkle some more salt on the cut. बताओ क्या समय आ गया, लोग चीची मांग रहे हैं। ये वैसे समय पहले भी हुआ करता था, अगर तुमने पैच 1 में खेला है तो। जब भी फर्स्ट कैरेक्टर्स जब भी आए थे ना, तो जब भी इनिशियल टियर लिस्ट में बैनेट जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर एफ टियर में होते थे, क्योंकि लोगों को उनका पोटेंशियल नहीं मालूम था। काया जैसे कैरेक्टर्स मिड टियर में रहते थे, जो कि अभी स्टार्टर्स में क्या कहते हैं, लिटरली एस टियर के कैरेक्टर स्टार्टर में तो। और चीची जैसे कैरेक्टर्स एस टियर होते थे। लोग डीलूक और चीची के लिए होप करते थे कि यार उनको डीलूक और चीची मिल जाए, क्योंकि इनिशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे और चीची के अलावा कोई हीलर थी नहीं गेम के अंदर टेक्निकली। तो चीची स्टार्टिंग के डेज में मेटा मानी जाती थी। वही डीलूक और चीची बोला ना मैंने। तो दोनों को चाहिए, लोग दोनों चाहिए होते थे लोगों को, बट फिर टाइम नहीं लगा। बार बार लोगों को पसंद नहीं थी, क्योंकि बार बार फ्रीज करती थी और पैच 1 में बहुत सारे क्रायो स्लाइम्स होते थे, तो लोगों को बार बार अच्छी नहीं लगती थी। बहुत सारे क्रायो स्लाइम्स होते थे, इसीलिए तो लोगों को डीलू अच्छा लगता था, क्योंकि डीलू के पास पायरो इन्फ्यूजन नहीं होती थी और डीलू सबसे एफिशिएंटली पायरो स्लाइम्स को क्रायो स्लाइम्स को मार पाता था। एनीवेज, लेट मी स्मार्ट। ये हिल क्यों रहा है? हेलो, हिलना बंद कर ब्रो। एनीवेज, let me sprinkle some more salt on the cuts. Add a bottle of salt. Add 3 water. भाई क्यों टॉर्चर क्यों करवा रहे हैं मेरे से ये लोग? Perhaps another dash of pepper. 3 bottle. Okay भाई। A sprinkling of spices to finish things off. बढ़िया है कि मैंने लेट में चालू किया खेलना। नहीं एक्चुअली वो वर्स्ट है, क्योंकि तुम वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। देखो, गेम के अंदर तुम वैल्यू करना चीज़ों को बंद करो और गेम के अंदर अपना एक्सपीरियंस वैल्यू करना ज़्यादा चालू करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गेम तुम्हारे लिए एक एक्सपीरियंस है रादर देन कि एक एसेट है। तुम हर जगह वैल्यू ढूंढना मत शुरू करो भाई। अगर तुमने वो टाइम पीरियड एक्सपीरियंस किया होगा, तो तुम्हारे लिए ये गेम के लिए ज़्यादा वैल्यू होती तुम्हारे लिए, कि भाई मैंने इस गेम में इतना टाइम स्पेंड किया है, मैंने वो टाइम पीरियड क्या कहते हैं एक्सपीरियंस किया है, जो ज़्यादातर प्लेयर्स ने नहीं किया। क्योंकि कुछ लोगों को नहीं मिलेगा वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए। डिफरेंट टाइम पे ये गेम डिफरेंट बिहेव करता था, अभी डिफरेंट हो चुका है। पहले मेटा कुछ और था, अभी मेटा कुछ और है। पहले गेम प्ले कुछ और था, अभी कुछ और है। इवॉल्व हुआ है ये गेम टाइम के साथ। फूटा बहुत समय तक मेटा में थी, वो भी तब जब भी उसके एनर्जीज इशू हुआ करते थे और लोगों को कोई क्या कहते हैं कुछ क्या कहते हैं टेक यूज़ करना पड़ता था उसका चार्ज कैंसिल करके, पता नहीं जो भी चीज़ है। अर्लिकिनो को तो बहुत जल्दी पावर क्रीप हो गई थी। किसने बोला अर्लिकिनो पावर क्रीप हुई है भाई? अर्लिकिनो स्टिल अभी भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। और बाकी देखा जाए कि तो किसी और गाचा गेम से काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गेंशिन ने अपना पावर क्रिप, बट टू दैट पॉइंट बहुत सारे कैरेक्टर्स ख़राब भी एग्जिस्ट करते हैं ये गेम के अंदर, मैं कुछ कह नहीं सकता। A sprinkle of spice to finish it off. Sprinkle it all, sprinkle it all on, और add it all. हाँ, ये दोनों ही वर्स्ट ऑप्शन है भाई। Now this is how you grill meat. Here, would you like some? I mean, you've had nothing for nearly 3 मुझे लगा ये days. टॉर्चर कर रहा है किसी को। Or would you like to try something else? Salt, pepper, spice. I believe salt. Oh. May I take this to mean that we have an agreement? ऐसे एग्री करा था ये लोगों को। Lovely. That makes us friends from now on. And you know how it is between friends. No betrayals. You understand?
So you two, I didn't lie, did I? Yeah, I didn't somehow. And that's the story, old man. Now pass on that benevolent knight title thing and get some well-deserved rest, all right? Hey now, we aren't finished talking yet, are we? Word is that you faced a truly formidable foe while in Nodcry. Someone called the Rahir of Solnari, I believe. Whoa, really? Why haven't we heard you and Varka talk about that? अरे उसकी लाइट गई होगी शायद से. There's nothing to tell. I was with the Grand Master when we ambushed Rerir, but not only was I useless, I even ended up acting as a punching bag. That left me laid up in camp for several days. By the time I could finally get out of bed, I heard the news that you had all joined forces to banish him. Oh, so that's why Paimon didn't see you when we were duking it out with Rerir. It's not like you to miss a fight. Oh, sorry. No need to apologize. You're right. I wasn't strong enough. Hmm. Yeah, भाई तो sad है काफी चीज. I was slow, weak, Powerless. Mortal. Lowen! Hey, you! Take him and fall back! He was a sinner who once set his face against the world. He wields abyssal power far beyond our imagination. Yeah, in the end, we had to use his power against him just to banish him. So, don't worry about it too much. but he was once a mere mortal too, wasn't he? हाँ, but उसके पास abyssal powers है ना? Well, I haven't seen this Rahir of Solnari with my own eyes, but I believe that strength alone does not a knight make. Anyway, I've got some important work to attend to. You and your friends can come along if you like, Lowen. Important work? Aren't you already semi-retired? Ha! Just follow me and you'll see. Consider this required reading for any benevolent knight. Dad! The benevolent knight is here! Grandpa Adorno! Cat भी है भाई. Hey now! No rushing, and no snatching. Easy now. Line up properly. Oh, it's all right. It's all right. They're just kids. A little excitement is a good thing. Here you go, today's candy. Thanks, Grandpa. Ooh, this is great! Is this the important work you spoke of? Oh, we're just getting started, recruit. Try to keep up. Understood, Captain.
I've never seen you this exhausted, even after a fight. I should be the one asking you. How are you so skilled at this? You get used to it. Such is the life of an adventurer. I can barely imagine our honorary knight doing things like this all day long. We don't spend every waking hour fighting bad guys who want to destroy the world, you know? Also, the world would be a way scarier place if that happened every day. You seemed a bit disappointed. But this is our actual daily routine. Daily routine, huh? I've been back in Mondstadt for a while now, but that thing hasn't been easy. Not long ago, camping in the wild and facing constant danger was our daily routine. But you were still on the expedition then, right? Now you can finally relax. Oh, you think so? Personally, I find it hard to feel at ease with any sort of daily routine. It was the Animo Archon who scattered the snowstorms that once swept Mondstadt. The Knights of Favonius who won the peace we now enjoy through conquest. A single, unexpected incident could bring it all crashing down. So, rather than waiting for someone to turn my daily routine on its head, I find it more reassuring to follow an extraordinary routine. We knights are needed precisely because the world is so fragile. Oh, are you done handing out the candy already? Indeed. Looks like you're all wrapped up here as well. Thanks for exercising such patience. This next task should give you a chance to stretch your legs. We're going to patrol the surrounding area for monsters. Monsters? What, are the knights short-handed? You haven't held a sword in years! Hey now, my retirement isn't official yet. It's just a patrol. I'm still more than capable of handling myself. Things did get a bit tough a while back, but look at me now, eh? Might as well get going while I still got pep in my step. Never one to sit still, were you? Fine. Where are we headed? We've had strange monsters show up around the outskirts. No one's gotten hurt yet, but you can never be too careful. Usually I just patrol the area for any approaching monsters, but this time, I've got you for backup. Yeah, forget about just patrolling. We can take them all on, no problem, right? Okay, the traveler काफी cocky हो गया. Piece of cake. Okay, wait. Sure, let's go. Huh? That's weird. Paimon thought he'd be more excited. Perhaps another task subject. We were expected. Let me try my blade with you or something. Well, why not? Paimon doesn't get him at all. अभी तक तो मुझे स्टोरी क्वेस्ट अच्छी लग रही है इसकी. भाई इतना दूर कौन जाता है पेट्रोल करने? स्पेशली भाई हिलिचल्स के टेरिटरी में कौन जाता है पेट्रोल करने? Weird? No signs of anything unusual here. Are there really monsters nearby? If you're looking for the ones that have been behaving strangely, I fear you're here too late. It seems someone beat the Knights of Favonius to the punch, and took care of them already. D-Luke? What are you doing here? Long time no see, Mr. Adorno. You too, traveler. Paimon? Lowen? Were the monsters here wiped out by a certain Dark Knight hero by any chance? No. I'm not personally familiar with this Dark Knight hero you speak of. But based on the rumors I've heard, the traces left on this battlefield don't match his style. Now this looks more like someone obtained advance intel on the monsters and came to clean up. Not even a single scrap remains. Oh? So it would appear you're here to investigate, Master D-Luke. That's odd. Why would the boss of the Dawn Winery be interested in monsters? तो पहले था ना वैसे कैवलरी कैप्टन वैसे. ओके तो मैंने अभी नोटिस किया कि उस भाई के पास C6 जो हो रहा है लेकिन बिन नहीं है क्योंकि उन्होंने फुल स्पैम करे हैं भाई न्यूएस्ट बैनर्स पे.
But C6 Jehuda हो या C0, I don't think so इतनी important है. Kind of mid character है. Dawn Winery's caravans pass through Dornman Port. The rumors left me ill at ease, so I decided to see for myself. As for the Knights of Favonius, are they still understaffed even with the expedition's return? Ha! Strict as ever, I see. I took this patrol up myself. Gotta keep moving while I still can. I've been living this life for decades. Can't just sit idle, you know? Thank you for your hard work, venerable benevolent knight. Wait, what? Not even Varka gets that much respect from D-Luke. I'd say that's Varka's problem. Eric only got away with causing that uproar by taking advantage of the Grandmaster's absence. If he and the Alder Knight had been here, they never would have allowed Krepus's heroism in driving off the dragon to go unrecognized. And we old codgers back in Mondstadt wouldn't have been the only ones left to stand up for your father. But they weren't there, were they? Let's cut the small talk. Since there are no clues here, I have no reason to stay. Goodbye, traveler, Paimon, and take care, benevolent knight. तो लोहिन के लिए कोई farewell नहीं. Ursa. Eric. Even when gone, some foes leave wounds that won't easily heal. Oh, need me to explain? Sure. Ursa was a wicked dragon who could really take a beating, and Eric was an inspector who could have really used one. Allow me instead. Ursa the Drake was a dragon who first appeared in Mondstadt 1,000 years ago, bringing calamity with its immense might. After the Knights of Favonius were founded, our first Grand Master, Vanessa, sealed it away with the Animo Archon's help. After that, the dragon sank into slumber. However, just a decade ago, it appeared in Mondstadt once again. With the Grand Master away, its timing could not have been worse. Not only that, it would lie low when the Knights of Favonius mobilized to attack, only to suddenly re-emerge when they were resting. Such perfect timing! In the end, it was also perfect timing that the Fatui Harbinger who exterminated it just so happened to be passing through. Fatui Harbinger. That's right. Your old friend, the Doctor. Or would it be more accurate to say one of his segments? So, Ursa the Drake waking up. It was all part of some plot by that segment? Not entirely. Even a Fatui Harbinger would have struggled to stir up such a storm in Mondstadt all by themselves. Indeed, there was one other person who, seduced by transcendent power, secretly colluded with the Doctor. He was the then Inspector of the Knights of Favonius, and the greatest traitor to the Knights in 100 years. Eric. The former Inspector of Knights. So what's his relationship with D-Luke? When D-Luke had just come of age, Ursa attacked a trade caravan from the Dawn Winery. It should have been nothing more than a common raid, a tactic they commonly use to incite fear. But the swaggering dragon was driven back by a mere merchant, D-Luke's father, Krepus, who paid the ultimate price. News of this defeat did not favor Eric's plan. News of this defeat did not favor Eric's plan to seize the power to Terra. So he suppresses the truth, claiming he was doing so to maintain the honor of knights. Excellent. News of this defeat did not favor Eric's plan to seize power through terror, so he suppressed the truth, claiming he was doing so to maintain the honor of the knights.
If only I had discovered a moment sooner that he and the doctor were working hand in glove. Perhaps I could have stopped everything that followed. देखो कैसा पता लगता था? That's not your burden to shoulder alone. Eric hid his true colors well. Up until the incident with Ursa. Even his victims had no idea who was responsible for their suffering. They may have got away with it for a time, but they have all paid the price for their sins now. We needn't continue to live in the shadows of scum like that, old man. You've got a point. We've got long lives ahead of us, after all. Let's get on with our next task, eh? This should lift your spirits a bit, I'm sure. We'll be assisting the 10th Company with their research. It's as we thought. The magic Miss Alice left behind isn't so easily understood. Hey, Sucrose! Huh? Is this? It's like something the Hexen Circle cooked up. Ah, Traveler! Are you here to assist with the development tests for the simulation training bubble Type 02? Is that the magic bubble that can recreate memories? I was told not long after my return that I could use this to catch up with the various events, large and small, that transpired during our absence. But using this level of magic for, well, storytelling seems like a huge waste of resources. You're not alone in thinking that. Our investigation team quickly recognized its broader potential for training simulations. If we could recreate formidable enemies from Senior Knight's memories and incorporate them into realistic, safe training simulations, that could help raise the whole organization's combat prowess. However, we've been debugging the bubble for a while now, and we still haven't fully grasped its underlying principles. We're also struggling to balance realism with safety. Safety? Doesn't sound like something Alice would give much thought to. That's so. Sounds interesting. Let me give it a shot. You're not here to take part, are you, Pops? Oh, not to worry. I know exactly how much strength these old bones have left in them. I'm just here to provide the memories inside my head. Oh? Then who was the tester in your original plan? Miss Sucrose, the test arrangements are... Lauren. Theodore? Why are you... Yeah, I just happened to come along with the Dorno to test this simulation training bubble. I take it you're the scheduled tester? Yes, that's right. And these are? किसी को नहीं पता क्या? Let me introduce you. These two are the honorary knight and her guide, Paimon. The honorary knight? I didn't expect someone so distinguished. And this is Theodore, a trainee medic with the 8th Company. Like you, he's one of Lowen's friends. Lowen? Friends? Oh, no need to sound so surprised. I have plenty of friends. Don't I, Paimon? Yeah. Paimon wonders how much this guy's friendship fee was. Theodore, isn't rescue and medical care more your thing? How did you end up getting roped into testing? I actually helped to construct this simulation, so I understand a few of its basic principles. Besides, I trained to become a knight too. And even if something happens, I should be able to patch myself up. But you needn't force yourself to do this if Vice Captain Lowen's willing to take over. We might get more practical test data from frontline knights too. So... Yeah, I suppose Lowen's the better pick. Chin up, Theodore. If anything happens to Lowen, we'll be counting on you to treat him. All right. I doubt there's a memory out there that can hurt me, but let's get started, old man.
Come on! Show me what passes for an elite foe in your mind. Don't get cocky, kid. You're not the only one who's been... Poke them? C3 है क्या ये? हाँ तभी इतना डैमेज है. They fall apart. I meant rabbits more fearsome. The clock's putting me to sleep. Yeah. They call this a secret source automaton? Fancy name for a chumped up boy. Looks like my memories can't give you much trouble. No fluctuation in pain parameters. Should we switch to a more normal test subject? No need. Let's continue the test. Are you sure? I don't think my memories will yield anything worth fighting against at this point. Don't we have a knight right here who's faced more terrifying foes? Come on, show me the Rahier of Solnari, as you remember him. I'm not so disheartened that I'd fear his memory. I just want to see if I'm still as powerless as he claimed. Yeah, भाई. Be careful! Test commence. Pathetic! It's all futile. Did he really get that much stronger? Pathetic! Well, futile. Okay, It's so- your turn to feel afraid. The moonlight. Crazy. स्किल पे कूल डाउन ज़्यादा है. ओके. वो स्टैमिना कंज्यूम कर रहा है. वेट बट वो स्टैमिना थोड़ी ना कंज्यूम करता है अपने ई स्किल पे. ये इनविजिबल बैरियर क्यों है यहाँ पे? Traveler, help me stabilize it. Bet you weren't ready for this. हाँ एंड क्यों कर दिया उन्होंने सिमुलेशन? व्हाट? Lowen! और इसको फ्लैट कर देता वो बेचारे को. बच गया वो. मेरी बेचारे की कमर टूट गई शायद. Mr. Adorno, are you... I'm fine. Just threw my back out. Gotta take a break, that's all. But Lowen... wound up hurting yourself from trying to hold back that final blow, didn't you? Theodore, go get him checked over. Last thing we want is to miss a serious injury. All right. Lowen, come with me. Mr. Adorno, are you all right? It's no big deal, just got old. Things stick with you once you're over the hill, waiting to be set off by the slightest exertion. Guess I'll have to ask Theodore for another prescription. Is there something up with Lowen? Could there be a problem with the magic? But if there were issues with the reproduced memories, the honorary knight should have noticed. I don't think the magic is problem. I don't think the magic is problem. I tried to control the projection. Are you saying the problem lies with Lowen himself? Did the battle with the Rahier of Solnari set him off again?
Set him off again? Lowen's pursuit of power began long ago. The traitor, Eric, collaborated with the Doctor on forbidden experiments in his quest for greater power. Lowen nearly became one of their test subjects. Experiments by the Doctor? Fortunately, the Knights tracked Eric's cronies down, uncovering their plots before they could act. They cut their experiments short and tried to transport their victims away. But we intercepted them in transit and rescued everyone. It's all right. It's over now. I heard about that. That was the incident that saw you gain the title of Benevolent Knight, right? I'd never have guessed that Vice Captain Lowen was involved. I never deserved that title. We saved the kidnapped children, yes, but I failed to root Eric out. I couldn't find their experiment site, nor could I help Lowen fully shake off the trauma of that incident. He's always believed he needs power to stay free from others' control. I'd hoped the expedition might change his perspective, but... The battle against Radier may have deepened his obsession instead. So that's what happened. It's tough having to act the part of a friend with someone like him, huh? Yeah. Wait. You saw right through us, didn't you? Nothing get past us. I may be getting old, but my eyes haven't failed me yet. Ignoring his methods, the fact that he's found companions willing to play along with his little charade shows he's made at least some progress. Even if you're just acting, maybe learning from you will finally help him figure it out. What's wrong? There's something I'm concerned about. Honorary Knight, would you mind taking a look at this? Strange. Mr. Adorno said that Lowen's obsession may have caused the projection to spiral out of control. However, the simulation training bubble type O2's parameters were all normal. If anything, it was the power Vice Captain Lowen released at that moment that appeared unusual. So, you haven't seen anything like this before? No. It's not the elemental energy we usually encounter. And it isn't the Void Realm energy that Mr. Albedo talks about either. Do you have any ideas what it might be, Honorary? I thought I sensed some familiar power back there, but I can't be certain. So, you think there's something up with Lowen? He's not messing about with something dangerous, is he? That's not what I meant. I'm just reporting my findings. We shouldn't accuse our companions of anything untoward, not without evidence. You have a point. We've just run into this sort of thing way too many times. Can't be too careful. Why did you come here today? We clearly agreed. Farka's orders, not my decision. Even so, that was way too careless of you. Using so much power. What if we're exposed? We'll just have to accelerate our experiments before that happens. कुछ तो सस हो रहा है भाई. That's Lowen. He just upped and left yesterday without saying a word. Let's check in with Adorno. Off we go! Hey, Grandpa Adorno! Oh, little Paimon and the Honorary Knight. Feeling better today? Right as rain. I wasn't really injured yesterday. Theodore had a look at me, and frankly,
I'm feeling better than ever. I've his treatment to thank for my continued vigor. Without his help, they'd probably have buried me years ago. Theodore? You mean the apprentice medic from the 8th Company? He didn't look all that skilled to Paimon. He once aspired to be a knight fighting on the front lines, but perhaps the physician's path suits him better. Anyway, enough about that for now. Did you guys come here looking for Lowen? Yeah! He disappeared after trying the simulation training bubble yesterday. We can't find him anywhere. Yeah, he left a note this morning. Said he wanted to apologize for what happened yesterday. He confessed that yesterday was all just an act, and that he couldn't stand this bone-dry daily routine. So, to make up for it... I'll wipe out every last one of those annoying monsters. That's how he apologizes? Huh. Totally his style. Should we go check on him? He's gone monster hunting by himself. Ordinary monsters pose no threat to him. What worries me is that something like what happened yesterday might happen again. If you could keep an eye on him, that would certainly put me at ease. I will keep an eye out. Let's see भाई ये बंदा कुछ तो सस कर रहा है क्या awkward जगह पे चल रहे हैं डी लूक क्या कर रहा है उनका Guess you're the last one. You'd better put up a good fight. Explain to Who's me. there? It ran away. I never thought a winery owner would care so much about hunting monsters. Or could it be you're after something else? And what about you? Are monsters all you aim to eradicate? Given how the previous scene was so clean that nothing was left behind. Oh? First I've heard of it. In that case, why don't we examine the monsters here? Perhaps we'll discover what it is about them that's attracting so much attention. Forget it. I'll go after the one that got away. Investigations and the like aren't really my style. See you around, D-Luke. That's the gist of everything that happened before you arrived. What's he trying to pull? Seriously! Forget punching bag night. He should be the needs a punch night. Are they all worth all the? Are they worth all this fuss? So what's the deal with these monsters? Yeah, Adorno talked about him yesterday. Sounded like they're kind of weird, but they haven't hurt anyone yet? Which is partly down to someone secretly eliminating them. And partly down to them preferring to attack their own kind whenever hunger strikes. They attack their own kind? Yes. Eyewitness reports are scarce, so we can't be certain. But the monster remains here do show signs that they've been fighting each other. Forming packs, yet killing each other. It's not the behavior of naturally occurring monsters. Huh? But if these monsters will attack each other, can't we just wait for them to wipe themselves out? Why be so vigilant? Because such beasts bearing Ursa's flesh have appeared before. And not just once either. Varka! Well, this is a coincidence. Honorary Knight, Paimon, and you too, D-Luke. So, the Knights of Favonius are not entirely ignorant of this anomaly. Yes. The tragedy Eric wrought cannot and will not be allowed to happen again. Did you just say Ursa's flesh? Is this somehow related to that Eric guy?
In his pursuit of transcendent power, he once conspired with one of Dottoro's segments to extract a serum containing the power of Ursa the Drake from the dragon's flesh. When the reckoning with the Knights came, he and his cohorts all injected themselves with that serum, causing us quite a bit of trouble. Their strength and bloodthirst increased in equal measure, and consumed by madness, they even attacked each other. Ironically, Eric ultimately failed to control that power. Not only did he turn his sword against his followers, but he went to his own demise in the process. Ursa the Drake? What exactly is it? How could it have such terrifying power? I heard it existed over 1,000 years ago. Yeah, but and it even fought with the first Grandmaster. First Grandmaster, the Vanessa, you know. That's right. Then why did they only seal it away? Was even the founding Grandmaster unable to kill it? No. It was spared because Ursa the Drake was once an angel. What? I've heard that long ago, the angelic race was faced with a difficult choice, and Ursa chose to preserve its power. Having lost its mind and retaining only power, this angel remained drawn to human settlements, not realizing that its proximity alone would destroy many. Is that why Vanessa decided to seal it away back then? Yes, but it was awakened by the Doctor's inducement, which was an oversight on the Knight's part. I won't deny that. Rather than assigning blame for the past, we would be better served by rooting out the present threat. But Ursa's flesh and blood, why would it reappear within these monsters? Eric was, admittedly, once a knight in whom we placed much of our hopes. As such, he knows our methods well. Before he met his end, he destroyed all records regarding his experiment site. To this day, we have yet to find any information to locate it. I suspect we have the segment to thank for that too. But Dottoro's backup plans were dismantled by the Traveler in Sumeru, a fact you're no doubt aware of. We believe this means that the covert measures he took in Mondstadt have also ceased to work. Ah, so those monsters, they all escaped from the experiment site? I'm afraid it goes deeper than that. Someone has likely restarted the experiments. Last experiment, Ursa's flesh blood and angelic powers. Does that mean the power I sensed Lohin yesterday is? You noticed it too then, during the commotion yesterday. So it's possible that Lowen has been dabbling in forbidden experiments to gain extraordinary power. He isn't bad enough to do something like that, is he? Wealth, power, authority. Too many things can turn a good person into a villain. Ursa, Eric, neither of them were the bad guys you might imagine before they made their fateful choices. But no matter Lowen's intentions, it is my duty to pull him back from the edge before he goes too far. So, what do we do now? Keep investigating in secret? No need for that. That's why I'm here at Dornman Port. I'm going to find him and ask him directly. Oh, slippery little rat. Pretty good at running away, aren't you? Now, where will you go from here? Hey, Lowen! Now's not the time to be cleaning up test subjects. The Knights are making their move. Lots of unfamiliar Knights showed up in Dorman Port today. Did yesterday's test expose us? Or did they capture an experiment subject? Could they have discovered? It was only a matter of time. I'd say we were lucky to have lasted this long. Steadfast allies make redoubtable opponents, as they say. What do we do now then? Find a place to lie low?
That would make reaching our objective even harder. That you were able to come here freely means the Knights haven't verified their suspicions just yet. We have to go all in while we still have the chance. Do it now. Use me as a test subject. Now? But those problems we were having before, we still haven't. Why are you hesitating? I told you, we're not the same, you and I. I'm doing this for myself. Extraordinary power comes with extraordinary risks. I figured that out a long time ago. But... Do it, now! Or have you forgotten your goal? No, it's not working. Was the dosage too low? Or was the concentration too weak? Or maybe the perfect result was never attainable. Lowen, we've got to hide. We can gather more monsters for experiments later. No, no. Hide? How much time do you think the Knights will give us, huh? We've always been gambling with a small window of opportunity. No, we'd only confirm their suspicions if we ran. That would make us targets no matter where we resurface. How would we get close to our target then? Then, what should we do now? We're going to break the target out tonight. Then, he can follow us down to hell. As expected, the Knights of Favonius are acting swiftly. There's a crowd gathering up ahead. Something about this feels wrong. That's... Torno! Ha! I finally found you. Keep a close eye on it now. Don't let it stray too far from you again, all right? Thank you. Thank you, Grandpa Adorno. And don't run off into the countryside alone looking for it again. I know you're worried about it, but Hannelor's worried about you, too. We'll keep this our secret this time, but don't let it happen again. Okay, I understand. Oh. A Oh monster! no, bhai. A monster? How did it get here? Something about this one doesn't look right. Don't be afraid. I'm here with you. Now stand up and get out of here. But... Run back home. Don't you worry. Gramps here is a knight. इसका वॉज होने वाला है मुझे लग रहा है. The knights who arrived later defeated the monster. Its power far exceeded what is normal. Adorno fought it tooth and nail to buy time until they arrived. Adorno! Adorno! Oh, जिंदा है ये? It's fine. You know my condition. I wouldn't have made it this far without your help. Fighting one last time to save others sure makes me feel more like a knight than lying in bed ever did. I'm sorry to do this to you now. I know you worked hard on those treatments. तो ये जिंदा है कब तक है मरने वाले है क्या? The title of Benevolent Knight and the Fifth Company's captaincy. If you don't want them, just let them go. Be true to yourself. That's all that matters. Lowen, come with me for a moment. The investigative team's analysis
shows that the monster that attacked Adorno bears Ursa's mark. Do you still intend to remain silent now that things have got this far? This isn't an interrogation. You can remain silent if you wish, but I hope you'll choose to come clean. I'll talk. I'll confess everything and accept whatever punishment awaits, but please, please give me one more night. Tomorrow I'll go to the Knights of Favonius and explain everything. I swear it on my honor as a knight. That's the first time I've heard you swear such an oath in all this time we've worked together. I know it doesn't carry much weight. Okay. Then let's use the Benevolent Knight's name to balance the scales. Please, keep your promise this time, तो Lowen. कितना बड़ा हाथ है भाई इसका वर्ड क्या हिली चेयर था क्या ये I'm पल्ले sorry, Theodore. I'd intended to make Lowen captain and leave my title to you. I know how much you've yearned for that title since you were little. It's not your fault, Mr. Adorno. I don't possess the talent that helped Owen pass the Knight's exam so easily. Years of work. And I'm still stuck as a training medic. How could I ever inherit your title? Medics, Knights, we're all protecting people, aren't we? The way I see it, you earned that title every day. No. In truth, I've done so much wrong. And what I'm about to do is worse still. So you agreed to his request? Just like that? What else should I have done? Ask him to submit a report for my approval? Please, spare us both. I know how much Adorno means to him, so I trust the weight of his vow. There once was a man who made many promises to my father in the name of chivalry. Yet in the end, he betrayed their friendship. Warped obsessions and the passage of time can turn friends into foes as easily as the wind changes its course. Quoting Crepus, are we? That really takes me back. Did you guys all know each other back in the day? Once, there were 3 spirited young men who imagined their futures together. One was a rich young master. He dreamed of becoming a knight, but ended up inheriting the family winery. Next came the hot-headed rule breaker, who ended up leading the Knights of Favonius. And the last one obtained neither the wealth he desired, nor the power he yearned for. Obsession was all that was left, piling up day after day into a towering spire. Is that how Eric let the doctor worm his way in? Eric made his own choices, no matter what was said to him. I understand his reasoning, but that doesn't mean I pity him. And it certainly doesn't mean I'll make the same mistakes again. I'm keeping a close eye on my subordinates this time. Bad news! Hey, I haven't finished talking yet. That voice! Did it come from where Adorno was just now? Let's hurry up over, take a look. देखते हैं क्या हो गया. Is he dead? I think he's dead. Leedsburg, what's going on here? Adorno's gone? Huh? Lowen and Theodore too? I don't know. I was on patrol and I saw the door was wide open. I looked inside and everything was like this. Captain Adorno couldn't have gotten out of bed in his condition. Could someone have taken him away? लोहन लेके It's an चला गया. emergency. कुछ Vice तो Captain हुआ. Lowen barreled straight through our patrols and headed for the outskirts. That kid. Seriously. Did he leave any sort of message? Message? He looked like he was in a hurry. All he said was out of the way before rushing off.
Let's go after him, I Of guess. course. But you know how fast he is. I'm afraid we... Track him as far as you can. Leave the rest to us. D-Luke, Honorary Knight, I'm counting on you to help me with this one. Oh, ow! Where did that come from? Adventure time! Off we go! Is this as far as we were able to track him? Well, he's not known as the 5th Company's sharpest arrow for nothing. Gone in a flash. If you want to praise him, save it for later. Don't we have any more clues? The dew on this grass is cold. Probably the effects of elemental energy. Traces of elemental energy, I should be able to track them. हाँ but मेरा middle mouse खराब है ना, ये traveler बार बार भूल जाता है, I guess. Oh, you really are something, eh, Honorary Knight? Okay, at least मेरे लिए खुद ही कर दिया उसने. Thank you. Still, being spotted by witnesses and leaving traces, that's not the Lowen I know. Do you think he wants to be followed? Whether he's in a rush to complete something, or stop something from happening, our task remains the same. Yep, let's get going. We've got to get to the bottom of this. Off we go. ये पूरा लैब बना के रखा हुआ है ना, ये एडिटोरी की लैब है शायद से. हाँ, एडिटोरी की लैब है. Vessels. It's like leading the expedition through Snezhnaya again. Could Ursa's power behind this? The vegetation here is like a little strange as well. Your earlier conjecture appears correct. This place indeed looks like an experiment site, left behind by one of the Doctor's segments. No wonder the Knights of Favonius have failed to discover the entrance for so many years. It was most likely his handiwork. And once the concealment faded, someone discovered this place before us, restarting the experiments on Ursa's flesh and blood. You don't think it was... इसको क्या हो गया? What a pain. How many more test subjects do we need to catch? Oh, ये लोहें की memories हैं, I guess. What are you looking at? Stay put, and don't cause any trouble. Very in first person में अभी
तो बस एक बॉक्स में बंद कर दिया। Sir, the new subjects are here. This brat's real vicious. Took a lot of work to quiet him down. Interesting. I'll take a look myself. कौन है भाई फुल वॉइस? Rejoice. You shall soon surpass the common clay of this world. You shall cross into the realm of the extraordinary. The experiment results have been confirmed. The serum dosage still requires adjustment. I told you, don't cause trouble. Was that a projection formed using memory? Seems like a trap laid to slow our advance. A trap? Could it be Lowen again? Nah. That kid would have come up with something way more deadly. In any case, Lowen isn't the only one who was captured by Eric and is familiar with this kind of magic. You don't look like you're here to assist. On the contrary, I believe ending this as soon as possible is the best way to help you. In this? Is that what you're saying now? Back when the test subjects were escaping left, right, and center? Back when I was ready to give up? Who was it who said I should keep going? Ugh. Did all the test subjects escape? You shouldn't experiment on yourself so soon, Theodore. Did you think that discovering Eric's lab and taking control of Dottoro's apparatus would be enough to help you restart their experiments? Look at you. You can barely lift a finger. Helpless to do anything but watch your test subjects flee. Lowen, are you here to stop me? Quite the opposite. Who do you think kept those monsters from eating you? You took care of them? I also plan to deal with the ones that fled into the wild. If you ignore them, the Knights of Favonius will follow them right back to your doorstep. Why are you helping me? I know what you intend to do with the flesh and blood of Ursa the Drake. I've read the examination report you wrote for Adorno. Old and frail, a mass of old injuries. One day you won't wake up. No one will be surprised. Without extraordinary intervention, that is. I hit it! Even Adorno himself didn't see it. Don't be so shocked. We're companions, both rescued by the benevolent knight. Did you really think I wouldn't notice your changes? Is that why you're willing to keep my secret? Oh, no, don't get me wrong. I sincerely hope Adorno can live a while longer. It'd save me from inheriting any unnecessary responsibilities. But what I'm more interested in is power. Aren't you concerned that your monster experiments have hit a bottleneck and that your own body can't bear Ursa's power? In that case, use me as your test subject.
Without you, we'd never have come this far. We're finding the serum, continuing the experiments, bringing Adorno here? Were these ideas not all yours, Lowen? That's right. And that's why I'm also prepared for failure. Failure? We're so close. As long as you don't blow our cover, we've still got a shot! Lowen, listen to me. The Ursa serum works. Adorno's improving. He can get out of bed on his own now. If it weren't for you, I don't think he would have lasted the week. But I can only add low concentration serum to Adorno's meals and medication for now. It won't cure the root cause. Is that so? Oh, that's good to hear. The smoother your experiments go, the greater my hopes of mastering this power. Do you think you could find the time to see him? He talks about you often. I'll pass. I'd really rather not listen to his nagging. Besides, unnecessary contact only increases the risk of exposure. We're running out of time. The Knights of Favonius will notice something is wrong sooner or later, no matter how many tricks we pull. They'll only work for a time. How much longer until you have complete control? Soon. Very soon. Thanks to your help, the serum's power has stabilized substantially. Though, I wouldn't call it a gentle concoction. Don't go using it on the old man to save time. Of course not! You're overthinking this. I know what I'm doing. Uh-huh, so you say. Everyone assumes they know what they're doing right up until trouble lands on their doorstep. If that day ever comes, feel free to slap some sense into me. Blow our cover. Do you think the Knights never suspected? Who do you think was delaying the investigation? How many times do I have to say this? We were gambling from the start. With our time, the Knights' time, and the time Adorno has left. If you lose a fight, you retreat. If you lose a bet, you accept it. Linger on the battlefield or at the gambling table, and we're bound to lose even more. What do you want to do then? Stand by and watch him die? Wake up already. In his present state, the serum would kill him. Would you prefer that? I haven't given up yet. I completed the final refinements before you arrived. This is the refined high-concentration serum. So long as I use this, even you won't be able to stop me. You can refuse to cooperate. That's fine. It just brings me back to where I began. I'll finish this myself. Relying on hazy childhood memories, Theodore was the first to find this place, restarting Eric's experiments to prolong Adorno's life. But at some point, the experiment failed, and the monsters escaped. Lowen then discovered him and offered his assistance, allowing him to continue extracting serum from Ursa the Drake. That appears to be the full picture. What do you intend to do with them? I'll leave that headache to Jean and the others to deal with later. Let them decide the appropriate course to take. For now, I'm more concerned about the remains of Ursa's flesh, buried here beneath the ground. यहाँ पर कोई एक चेस्ट है क्या? Let's see. अच्छा ये लोगों का बॉक्स है पहले इसमें लोगों ने बैठा हुआ. Anyways, but कोई चेस्ट नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे. Adventure time. According to the experimental logs, extracting high-concentration serum requires repeatedly stimulating Ursa's flesh to increase its activity. There's an ominous feeling growing stronger by the second. Prepare for battle.
Adventure time! Why? I used the highest concentration possible. You're weak. And you don't even have the self-awareness to realize it. Self-awareness? What right do you have to talk to me about self-awareness? You lost control once before as well. And that's how I know we can't go on. If the price for saving Adorno's life is his very self, then we won't be saving him. But the monster he'll become. Take a long, hard look in the mirror. Are you really the person he chose to inherit the benevolent name? I won't accept this! I can't accept this! When was the last time I embraced the two of you like this? In the blink of an eye. You've grown too big for hugs. Adorno? How did you... I heard everything. You've been helping me cling on, haven't you? It's thanks to both of you I have this chance to hug you once again. Just like old times. All that's left to say is, it's all right. It's over now. Why the tears? It wouldn't do for the benevolent knight to check out by making kids cry now, would it? Promise me, you'll see me off with a smile. I just don't want to watch you. Isn't it enough that you're here by my side? Adorno! Theodore! This issue has been resolved, I take it? Not entirely. What was that sound? I knew it. You had to stimulate Ursa's flesh beyond the high-risk threshold to extract the necessary serum. If its power is allowed to continue overflowing, all nearby life forms will be affected. Just like the plants here and those monsters we saw earlier. Why are you still trying to act tough? You can barely lift a finger right now, can you? I know that feeling. Hand it over, and then get out of the way and watch. The key to the underground is in the lining of my coat. Please, destroy Ursa the Drake's flesh and its power. Goodbye, Adorno. Go. That power was never meant to linger in this world. Past this point, that's where Eric and the doctor conducted their experiments on Ursa, isn't it? Sure is. A madman seeking power and an angel who chose it. What a farce. One that we're about to bring the curtain down on. Ursa the Drake's residual power is not to be underestimated. Eyes on the prize, everyone. This will be a tough fight! Oh! What was that noise over there? Monsters. Captured for experiments long ago. They survived until now thanks to the doctor's apparatus and Ursa's power. I added quite a few to their number myself. Looks like they're getting restless.
We could do without them complicating our fight with Ursa. Well, if they were sturdy, I wouldn't have had to work so hard to clean up previous escapees. But don't worry, they won't disturb you. I guarantee it. The ambitions of old subordinates. Revenge for beloved family. Those are your grudges to settle, are they not? In much the same manner. You just leave the monsters I captured to me. Oh, one last thing. Vice Captain of the Knights of Favonius, 5th Company, requesting permission to attack. Ha! Finally reporting in before you sortie, huh? Give him hell, Lowen. And don't die. That's an order. In that case, please dispose of Ursa at your earliest convenience. Traveler, should we help him? He has his own score to settle, I guess. Oh, looks like that kid's friendship fee wasn't a complete waste after all, huh? Can he handle them all? Trust him just as he trusts us. After all, he's set to become the youngest captain since your appointment. Eric, Rerir, Dottore, and now Ursa. Guess I'm not destined to rise to such challenges. But ordinary people, we have our own battles to fight. So go. Settle things with your obsessions. Once and for all! Huh. ये एनिमी बहुत ज़्यादा वीक हैं भाई। I mean, माना कि ये Constellation 3R1 है, but still. I won't judge. Things seem pretty intense over there too, huh? That's a battle between legends and a dream. There's no time for distractions. With me! Charge! Your verdict is? Now, be gone! Wanna leave, do you? Can you hear Ursa's call? Or is it the serum you smell? Well, I'm afraid that just won't do. Behind me stand not only heroes who battle wicked dragons, but slow, fragile mortals too. So... come at me! Each and every one of you! Their strength and bloodthirst increased in equal measure, and consumed by madness, they even attacked each other. This is the refined high concentration serum. So long as I use this. Yes! Good! Come get your fill! Not one of you will get past me! Let's fight! थोड़ी सी स्क्रीन मुझे दिखती तो अच्छा लगता। Like lambs to the slaughter. Leave none stand. Rejoice! You shall soon surpass the common clay of this world. You shall cross into the realm of the extraordinary. Once, you believed you could control your fate by killing power. Slow, weak, powerless, mortal. Then, your paltry arrogance was smashed by power beyond reason.
except that we should send our strongest warrior to fight Nodcry's battles. You are not special. That is the truth. One you once thought you had accepted. What do you want to do then? Stand by and watch him die? Yet you will not suffer a mundane death to befall you. You are not wrong, you never have been. Power is the sole solution to all things. It is how we grasp destiny by the throat. It is how we resist even death. You simply lack enough of it, not even close. Unless you accept this gift. Power means are neither good nor evil. Have you not always believed so? Caught up abysmal power, seeking aid from a coven of witches, leaning on to find favor. Is there any difference? Are mortals unworthy of power? Now then, accept my strength, my guidance. You're right. Power is just power. It's humanity's arrogance and stupidity that invite destruction. Not so talkative now, hmm? You embrace mediocrity. You spurn my counsel. What I desire, I'll take with my own two hands. If I accept your guidance, I wouldn't be the master of that power now. Would I? Be gone. I have no need for power I don't control. Lowen! Wake up! Lowen! Lowen! Are you trying to burst my eardrums? I was just taking a quick nap. That fight took a lot out of me, you know. Never thought I'd hear you say something like that. I didn't inject myself with it. Just used it to attract the monsters. Can't exactly deal with out-of-control monsters when I'm going berserk myself, can I? Plus, wouldn't want you finishing off Ursa just to turn around and have to deal with me. There's still a little in my system from previous experiments, though. That stuff gives you a real headache. Ursa's flesh has been destroyed. There shouldn't be any further risk of activation. I see. Totally obliterated, huh? What about Adorno and Theodore? A reinforcement showed up. I had the Knights escort them back. As for Theodore's punishment, and yours, I'll look into it later. Stay with him until the very end, you hear? Thank you, Grandmaster. Do not stand by my grave and cry. My life I gave to wipe tears dry. Here rests the benevolent knight. This epitaph suits you, old man. Who chews bubblegum while visiting a grave? Hmm? Oh, you're here to see Adorno too, are you? Hey, want some gum? You always like messing around with this stuff. Said it made the kids happy. Pretty sure he'd be glad to receive candy on the other side.
I had nothing else to do during confinement, so I made candy to stave off the boredom. Oh, no wonder we didn't see you at the award ceremony. You were in solitary confinement the whole time, huh? That wasn't all. Our dear, reasonable acting Grandmaster Jean handed down 2 other punishments. The Knights have decided Oh to my God. rescind my commendation and not promote me to captain. The title of Benevolent Knight is to be buried with Adorno. The position of 5th Company Captain will also remain vacant, for the time being. Is that really okay? To quote Varka, look, Mondstadt did just fine for a long time with only an acting Grandmaster, right? And it's all the more so for the title of Benevolent Knight. I will not allow anyone unworthy to inherit it, even if the unworthy successor is me. Paimon suddenly felt like that title suited you for a second. Must have been her imagination, eh? ये देखो rage bait. I prefer a different title, really. The ends justify the means knight. The a win is a win knight. The punching bag knight. Sounds alright, too. That said, it seems this sinner will have to win a few more battles first before getting his next commendation. Are you still pursuing power or are you pursuing victory? Of course. After all, someone once told me, acknowledging my limits is the first step towards transcending the mundane. I'll keep winning, no matter what it takes. Relax. Learning from our mistakes is part and parcel of getting stronger, no? Besides, I know why I pursue power. Forgetting what you wanted in the first place? That would be true defeat. Do I look like that kind of idiot to you? It's food for thought. Best to have someone on hand to help if something does go wrong. In that case, until I'm strong enough to shoulder everything on my own, don't grow old on me. All right? Okay. Honestly, boring game. I'll be very honest, लॉगिन की स्टोरी क्वेस्ट थोड़ी बोरिंग थी. स्टार्टिंग में अच्छी थी, start off good. It started off nice and then it got boring. I think the oh ये मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी. ये मटेरियल्स मेरे को फार्म नहीं करने पड़ते हैं. Anyways, it's not like that it matters now. एक ही चीज़ है. I think ये टाइम लिमिटेड नहीं है. Available after unlocking meeting point. टाइम लिमिटेड नहीं तो आराम से कर लूँगा मैं. It will take 4 weeks to complete the entire Beyond Silver and Fine Gold question. Please plan your playtime accordingly. Oh my god. ठीक है चीज़ है. A new album. What? क्या लिमिटेड टाइम रिवॉर्ड्स आते हैं क्या इसमें? $140. ओ थीम्स बाय कर सकते हैं इसमें. मैंने ये कभी खेला नहीं है एक्चुअली. मैन्युअली जाकर हटाने पड़ेगा. What about this tutorial? मेरे से नहीं होता. फिर तो मेरे से भी नहीं होगा भाई. डिफिकल्ट होगा फिर तो यार. बट इसमें कोई रिवॉर्ड्स है क्या? ये क्या चीज़ है? अटेन Dulcium rating on the latest album music. Score का difficulty 08.
कौन सी है ये? कौन सी एल्बम ना? इतनी सारी एल्बम्स क्यों हैं यहाँ पे? कॉप में ट्राई करो। नहीं, मेरे को पहले पता तो लगता था ये है क्या चीज। ओह, ये मुझे एक्चुअली करना चाहिए। मेरा फेवरेट म्यूजिक है गेम का। दिस इज योर फर्स्ट टाइम एक्टिवेटिंग, प्रोसीड विद कोलैबोरेशन। ओके ओके, नहीं ये क्या चीज़ है? ओके ठीक है, 0 पे ही ठीक है। ये क्या कंट्रोल्स है भाई? 60 प्रीमियम्स मिलेंगे, नाइस। लेट्स सी, ASDGL, ये क्या कंट्रोल्स होता है? JKL ना? अरे सिंपल वाला इजियर रहेगा करने के लिए। इसका एक एंडलेस होना चाहिए यार, जैसे ऐसा वन ऑफ दोस पियानो टाइल्स जैसे गेम जैसा है। ओके, नॉर्मल, ओके।
ए और एल इतने यूज नहीं हो रहे हैं. आई थिंक अगर ए और एल यूज होंगे तो शायद से मैं नहीं कर सकता. एक मिनट, तो ये रिवॉर्ड सिर्फ नॉर्मल तक मिलता है, तो वो हाईएस्ट डिफिकल्टी करने की ज़रूरत नहीं है. एल ए वाली हार्ड पड़ेंगे आई गेस. ओ भाई ये हार्ड है. ओके भाई ये वाला हार्ड है. ऐसा ये वो इंस्टेंट है क्या? आई थिंक डिले है उसके लिए तो. अच्छा एस है क्या? भाई ये नहीं हो रहा. मेरे को थोड़ा सा बीच में गैप देंगे तो मेरे को विजुअलाइज करने में थोड़ा इजी हो जाएगा. तो ए ट्रिगर कर रहा है यार. ये पार्ट वो ए यूज कर नहीं रहा है.
अभी वो अचानक से ये यूज कर रहे हैं। ओके ये वाला इजी पार्ट है, फिर हार्ड पार्ट आता है। मैंने ये वाला खोल नहीं किया पहले वो 82%। I'll take it। ये वाला फास्ट हो गया। Okay, wait। Oh wait, क्या होगा इस वाला? Oh, छोड़ दो यार, टाइम हो गया। सब पहले ही कर रहा हूँ। ऑफसेट क्यों है? Anyways, कितना मिस कर रहा है? 90 मिस कर रही है साला। कुछ ही गाने हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं इसमें। नॉट करेगा ही करूँगा प्रॉब्लम।
ओके, तो मुझे इसके साथ एक मेजर प्रॉब्लम दिखती है गेम के साथ। वो लोग ए और एल यूज नहीं कर रहे, तो फिर वो उसकी आदत कैसे होगी? Yeah. Press हो रहा है। I'll take it. I think मुझे इस वाले में प्रो वाले में थोड़ी डिफिकल्टी आती है ज़्यादा, क्योंकि इसमें एल और ए तो यूज़ कर ही नहीं रहे थे ना अभी तक ना। और अभी अचानक से और एल और ए अचानक से यूज़ करना चालू होता है, ये प्रॉब्लम है। फर्स्ट कॉम्बो नहीं हो रहा मेरे से।
ज़्यादा डिफिकल्ट है। कौन सा वाला करना था वैसे वाला जो मुश्किल है? लेटेस्ट एल्बम कौन सी एल्बम है ये वाली? और हडसन सर्व करना है। ओ भाई ये वाली एक्चुअली डिफिकल्ट है बाकी सबसे। होल्ड करने वाला। ये चाहिए था ना ठीक। प्रीमो जेम्स मिल जाने चाहिए आगे। ये सब में करना है।
Latest album. Monthly selections हैं क्या ये? I think ये वाला करना चाहिए, वरना easy रहेगा करने में। सही कीज पकड़ रखी है।
कितने रह गए हैं? अब 5 6 7 3 हो रहा है. क्लिप अच्छा होगा. लिरिक्स हैं इनमें? मुझे लगा कि वो कहाँ म्यूजिक है.
लिरिक्स अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ अभी आया। I think अभी 3 और हो गए। अभी मिल जाना चाहिए। Oh. सिर्फ अभी स्टोरी ये रह गई है अभी बस और कॉन्क्वेस्ट। Good मैं things किसी come दिन to टाइम those निकाल who के don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my बैठ के मैंने क्वेस्ट करी उतने में 60 वर्जन आ गया वापस अपने पास। opposite is इसका वो निकाल सकता हूँ क्या मैं? Okay, reach a performance rating in 15 different. Redeem one score theme. Reach a performance rating in 5 different music score by other players. I think मैं अभी भी निकाल सकता हूँ ना, पर मेरे पास मैचिंग का होगा क्या इसके साथ पोर्ट्रेट? ना अभी नहीं, मैचिंग है ही नहीं मेरे पास। ये प्रोबेबली मैच कर सकता है या फिर ये वाला। We'll see. probably Trupani's adventure. Okay. भाई यार सारा टाइम कितना टाइम लगाया मैंने ये अकाउंट को? 6 घंटे हो गए हैं। अब स्विच कर रहा हूँ मैं अकाउंट्स अपने। डैम भाई, दूरी दूरी बोल रहा हूँ, लोहेन की क्वेश्चन ने सारा टाइम ले लिया आज। Touche. ये फाइट क्यों कर लेंगे? हेलो This realm is...
If you ever have... एम्बलम कर रहा था ना मैं आजकल कहाँ गया एम्बलम Quick, under the umbrella, or you'll get soaked. Everybody stand back! Shudder! Let's light it up! Off we go! I'm going in! Can't handle your drink. Crush! Think you can bully me? Shudder! More speed. डिफेंस सैंड से गॉबलेट है सैंड जैसा क्या दिखता है पर डिफेंस गॉबलेट बकवास पीस भाई Illusion shattered. Shake it, ass. Teamwork is strength. Crush! Beg for mercy. Where'd that come from? Ayana special. Yeah. Crush! Yeah. Scratch that. I'm going in. Beg for mercy. Yeah. Shudder. Rack and ruin. More speed. Shine down. Shake it, ass stir. Flippy. Everybody stand back. Crush. I condemn you. Where'd that come from? Teamwork is strength. Shudder. Can't handle your drink. Illusion shattered. Beg for mercy. Shudder.
चलो फेदर लेवल अप करके देखते हैं। एक डेड स्टार्ट है। क्या पीस है भाई ये। एनर्जी रिचार्ज चल ठीक है। अभी के लिए राइडन के लिए सही है ये, क्योंकि इस वाली पे कितना 12। ये वाला ठीक है, ये वाला फोटर हो गया। There is no escape. Everybody stand back. Flood of frost. The odds are against us. Crush. भाई इसकी शील्ड Shine down. कोई फास्टर वे नहीं है इसके शील्ड तोड़ने का। Beg for mercy. Shudder. Everybody stand back. Yeah. Good grief. Let's light it up. Vengeance will be mine. Yes, I got my comeuppance. There is no escape. Where's that come from? Beg for mercy. Teamwork is strength. Crush. Shudder. Beg for mercy. Illusion shut. Shudder. Think you can bully me, Diana? Beg for mercy. More speed. हाँ पीछे कैसा There is no इसका स्लैश और जब बैकवर्ड कैसा भाई इसके स्टोन्स को हर्ट करना बंद कर। Adventure time. Teamwork is dreamwork. Shudder. More speed. Eye for an eye.
Astra. Add Astra. Thank you for completing today's commit. Acceleration 21%. स्ट्रेट अप जाकर एक्सप्लोरेशन भी तो कर सकता हूँ बट अभी नहीं है देख लूंगा स्टोरी क्वेस्ट I know. Present. अच्छा
Yo, obviously, welcome back. Bow your head. Clouds high. The birds come. Bring it! Yoo-hoo! Settle down. Be sanctified. Let the world collide! Silence. Wind strike. As one with wind and cloud. Shower me with praise! Let my name echo in song! Bow your head. The tides beckon. Bring it! Okay. ऐसा लगता है कि मैंने काफी टाइम से आर्टिफैक्ट नहीं करे मैंने खाली मैं बोल रहा कि मेरे पास आर्टिफैक्ट हैं कितने 9 एक्स्ट्रा है मेरे पास ओवर कैप कैसे हुआ मैं गोल्ड कितने हैं काफी गोल्ड है हाँ यार गोल्डन रूप हम तो सब मेरे पास इतने सारे हैं तो अनलॉक्ड है मेरा अच्छा माय गॉड मैंने कल वो किया था ना अभी करो कल मैं फार्म कर रहा था आपके लिए तो जिससे कोई ज्वाइन ना करे और ये तो कभी ना अटैक थोड़ी ना यूज़ करेगी वो तो एचपी स्केलिंग कैरेक्टर है कोई भी अटैक क्यों यूज़ करेगा फायर डैमेज अभी के लिए यार ये चीज़ है और काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट अनलॉक भी करने पड़ेंगे जो आई एम प्रीटी श्योर किसी काम के नहीं है ग्लैडिएटर सीखता हूँ अटैक गॉबलेट एक डैमेज के साथ काम करने फिर भी करने में
Let's see. HP goblet. HP goblet चलता है, हाइड्रो डैमेज goblet चलता है. I don't know. We will see. हाइड्रो डैमेज goblet ही चलना है. HP goblet चल जाना चाहिए उस पर. हाइड्रो डैमेज भी सही है बट HP बेटर है. प्रॉब्लम यानी ये बेकार है बट HP है. HP sense फिर डैमेज है. We'll see. पहले देख लेते हैं मेरे पास है भी कि नहीं. Attack sense I will keep. Defense. Into physical beacon. Chill. Pyro. Beacon. Beacon. Oh, HP goblet double crit. Nice. I'll keep this. EM double crit, I'll keep that. Defense. Oh no. अगर HP होता उस पर तो मजा आ जाता है. You're welcome back. I did a major sounds that पर काम का नहीं.
rate, crit damage, सब बेकार है। नो, एक भी सिंगल अच्छा नहीं है। खत्म होने वाले हैं, खत्म होने वाले आर्टिफैक्ट। मुझे कुछ देखने पड़ेंगे कि मेरे पास जो ये लॉग्ड है इनमें से एक्चुअली कितने कितने एक्चुअली यूजफुल हैं। ये सब फॉटर है तो इनको रखना पड़ेगा। HP सेंस देखता हूँ अगर मेरे पास अभी जो इतने सारे मैंने निकाले हैं ये भी तो फेंकने हैं। गॉबलेट और देखते हैं अगर HP होता उसमें तो अच्छा लगता। हाँ एक अच्छा आर्टिफैक्ट नहीं। तो मैं एक्चुअली ग्रीन वाले डिलीट कर रहा हूँ। आई डोंट रियली केयर। मोरा बहुत खाते हैं या उतने एक्सपी देते नहीं हैं। अभी मेरे पास अभी भी 2000 है। कितने ब्लू वाले हैं मेरे पास? ओके पर्पल वाले ज़्यादा हैं, ये वाले भी ज़्यादा हैं। Water comes in many flavors to the discerning palate. Okay, let's see. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor. कितना बोलता है भाई नोबलेट। बताओ फिल्टर not maxed, logged only, not equipped। let's see कितने यूजफुल हैं इनमें से। बेकार गॉबलेट है। I'll keep this, I don't need this। fire damage no। double crit, elementary mastery, energy recharge attacking। we will see अगर ये किसी के काम आएगा तो। ये बेकार है, ये ठीक है, ये बेकार है, ये क्यों लॉक किया मैंने? ये ठीक है। हीलिंग बोनस पे डबल क्रिट क्यों आता है हमेशा?
is this? Yes. कल मैं 2 बजे सोया और डैम भाई मैं तो बटरफ्लाई क्रैक कर रहा हूँ लगभग डोमेन में। अच्छा सही है भाई। हाँ ये वाला बेकार है, ये ठीक है, ये बेकार है, इसे हटाओ। ठीक है, बेकार है। और 85 ठीक है, ठीक है। ऐसे फेदर कौन लॉक कर, ये आप ये ऑटो लॉक हुए हैं क्या भाई, ऐसे बकवास फेदर्स। डैमेज शायद से ऑटो लॉक हुए हैं, इसलिए मैं अभी ऑटो लॉक यूज नहीं करता। ये ठीक है, ठीक है। ये ठीक है। अभी देखो मेरा इतना जल्दी भर क्यों गया है ये। हाँ ये ठीक है, ये हम इसे रखता हूँ। 23 EM, इसमें EM लॉ, इसमें EM रोल हुआ था, पता नहीं, इनको रखना पड़ेगा। ये फेंको, बेकार है, बेकार बेकार। हाँ ये ठीक है।
क्यों हो गया वापस से वो? ये ठीक है। ये भी बेकार है ये। व्हाट ओशन कैपिटल पर हमेशा बकवास साइट पे अच्छे स्टार्स क्यों मिलते हैं? आई थिंक ये वाला एक ईएम रखूंगा मैं जस्ट इन केस, अगर किसी को चाहिए तो। वो तो दो ही है ना, इस वाले में डैमेज है, इस वाले में एनर्जी रिचार्ज है। हाँ तो ये बेकार है, इसे फेंको फेंको, इसे रखता हूँ। तो ईएम के लिए रख सकता हूँ अभी के लिए, बट नेवर नो भाई। 16 ईएम फिल्टर ठीक है। हीलिंग बोनस, डिफेंस पेपर, अगर डैमेज बोनस ऑन सेट है वैसे, अभी के लिए रख देता हूँ। पता नहीं, मेरे को ये वाले देखने पड़ेंगे अगर काम आ सकते हैं तो। अगर स्प्लिट डैमेज है यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अभी आए हैं नए, ये बेकार रखे को इसको। अभी के लिए ऑब्सीडियन रखने पड़ेंगे, मेरे पास है नहीं ज़्यादा पैसे ऑब्सीडियन के। ओके ठीक, चलो भाई के पास कॉफ़ी है। इसलिए चाहिए भैया कॉफ़ी। ओ लोकल लेजेंड के लिए उसकी बहुत एचपी होती है भैया कॉफ़ी।
लेवल 50 पे है मेरी, और इस अकाउंट में थोड़ी ना कॉफी है। फिर रुको मैं चेक करूँ कि क्या फुरीने के पास अच्छा आर्टिफैक्ट है भी कि नहीं। ओके लेट्स सी, उसकी बेस्ट पीस ये हो सकता है अदर, उसके पास अच्छा नहीं है। एचपी कहाँ पे, एचपी 5.86 एचपी हाइड्रो डैमेज। एचपी ऑलरेडी चलेगा वैसे, ये है ना ये पेनिट्रेट बेटर रहेगा। इसको फेंको पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको फेंको इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस 1 मिलियन हो रहा है। पहले बेकार आर्टिफैक्ट फेंक के चालू करते हैं पहले। डबल हो सकता है। हाँ ओके, ये अच्छा डिसेंट डिसेंट पीस है ये। अरे अच्छा पीस है, अभी अभी के लिए रखूँगा मैं इसको। प्लीज विल सी। नहीं खराब हो गया ये पीस, एक्चुअली खराब है ये पीस, मतलब उसमें एटलीस्ट एचपी है, उसमें क्या है? ये वाला पीस का अभी सारे होप्स अपने इस आर्टिफैक्ट पे हैं। ऑफकोर्स डिफेंस में रोल कर नहीं था वो। टीएम में नहीं, आई गेस मेरे पास इससे अच्छा पीस है नहीं कोई सा, बस सब कुछ इसी में जा रहा है। मेरा मोरा खत्म हो जाएगा। ओ माय गॉड भाई, इतना खराब है। प्रॉब्लम फॉटर है भाई, नेक्स्ट पीस जब भी मिलेगा फॉटर है ये। You know what?
डिफेंस पे नहीं रोल, ऐसा नहीं हो सकता भाई। तुम चाहते हो मेरे डिफेंस पे रोल हो? क्योंकि मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हाँ, ठीक ठीक हो गए बीच में। हाँ तो बेकार, बकवास, कचरा, कचरा, कचरा। एचपी क्रेडिट रेट के साथ है अभी। शायद से है मेरे पास ऐसा पीस है मेरे पास। एक एक के बाद देखता हूँ अगर रिप्लेसेबल है तो, क्योंकि ज़्यादा मोरा नहीं लेता। बकवास, बकवास, बेकार, बेकार, बेकार। What the hell? Okay. Select menu. स्ट्रॉन्ग बॉक्स वैसे स्कैम तो है, ज़्यादातर प्लेयर्स के लिए स्कैम ही है स्ट्रॉन्ग बॉक्स। टैग डबल हिट ओके भाई। आई थिंक फिशल पे यूज़ कर सकता हूँ ये मैं। बट डबल एचपी क्यों है इसमें? इस पर डेड स्टैट्स, डेड रोल्स ज़्यादा हैं। कचरा, एनर्जी रिचार्ज पे आई डोंट नो। खत्म हो गया मेरा आर्टिफैक्ट। एचपी गॉबलेट बेकार, बकवास। अटैक गॉबलेट ठीक है भाई, मैंने किसके लिए? लास्ट लास्ट इसके बाद शायद एक आर्टिफैक्ट और निकाल सकता हूँ। बेकार, बकवास। ना यार, ये तो स्कैम है। ओके, शायद से मेरे को एक पीस मिला है इसके लिए। कौन सा पीस मिला था? फैदर मिला हुआ है। बट ये क्या, ये इससे अच्छा हो सकता है? I mean, ये वाला पीस बेकार है। तो ये पीस बेकार है। सिर्फ इस पे एच पी है क्या? इस पर 4% एच पी है। वैसे भी मुझे नहीं चाहिए ये वाला। आई नो एक दो रोल हुए होंगे, एंड आई नो कुछ लोग यूज़ कर सकते होंगे इसको, बट स्टिल।
मेरे लिए बुरा रोल नहीं है इधर कोई सा, मेरे लिए कोई बुरा रोल नहीं है। 40,000 मोरा गया। ओके, आई विल टेक इट, आई विल टेक इट। अच्छा पीस है ये, बट मुझे खुशी होती अगर फ्लैट की जगह परसेंटेज में जाता था, बट स्टिल। मुझे बस एक याद आया, एचपी सैंड्स था ना, इसमें कुछ अच्छा रोल नहीं हुआ, इसमें 22 डिफेंस रोल हो गया वैसे। 22 डिफेंस, आई थिंक इस वाले को रिप्लेस कर देना चाहिए मुझे इससे। एटलीस्ट उसमें रेड डैमेज में रोल होगा तो मुझे खुशी होगी। बट इसमें एचपी है, इसमें एचपी नहीं है, इसमें फ्लैट एचपी है। तो भाई पहले वाले से तो बेटर हो ही सकता है, उसमें लिटरली 3 डिफेंस रोल है। ये क्यों ऐसा फेंक रखा है मैंने, ऑफिशियल को दे दूंगा ये। एनर्जी में जाता तो सही रहता, बट स्टिल आई थिंक इसको मैक्स करने के लिए मेरे को काफ़ी सारा मोरल लूज करना पड़ेगा। मेरे पास कोई लेवल अप नहीं है क्या, वाटर पीस नहीं है कुछ। ओके, तो ये वन ऑफ दोस वाटर पीसेस में से एक है, इसे निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। आई थिंक 3 में हो जाना चाहिए। एनर्जी रिचार्ज, आई मीन पहले से ठीक है, पहला वाला कचरा था, एब्सोल्यूट कचरा, पहले से ठीक है। लेट्स नॉट गेट आवर होप्स अप। 83, 123, क्रिट डैमेज कम है, हम क्रिट रेट चला रहे हैं, थोड़ा सा डैमेज इंक्रीज होना चाहिए। काशी डिफेंस वाला कैरेक्टर्स ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो ऑफ पीस फिर भी एक ही चलता। देखो बस ये समझ में नहीं आ रहा अचानक मेरी ये 300 250 पिंग क्यों है, 250 क्यों हो गई मेरी पिंग। ये पिंग कहाँ गई। साइकिल्स थोड़ी सी स्लो हो जाएंगे या हाई पिंग की वजह से, कि करेक्टर स्विच नहीं होते हैं। वी तो चला गया होगा अभी तक, कम है डैमेज, बट स्टिल पहले से तो फिर भी इम्प्रूवमेंट है।
टीपॉट विजिट किया गया वैसे मैंने शायद कभी से क्लेम नहीं किया ऐसा कुछ। मेरे पास भी हाइड्रोजियो डैमेज और एनिमो का डीपीएस नहीं है। एटलीस्ट तुम्हारे पास पायरो डीपीएस कैरेक्टर है। क्योंकि पैच एंड होने वाले एक बार देख लेते हैं। इवेंट हो गया, स्टेशन से रिवॉर्ड निकाल लिए हैं। इसको कल करूँगा बैठ के। कल भी क्या करूँगा, ऑफलाइन ही करूँगा। ये परमानेंट है, इसको कर लूँगा मैं बैठ के। बाकी सब हो चुका है। अच्छा हाँ, आर्टिफैक्ट तो रन कंप्लीट किया ही नहीं ना। हाँ ये नहीं करना मैं। तो सॉन्ग ऑफ डे पास करूँगा फाउंटेन में। हाँ तो होता सॉन्ग ऑफ डे पास कर दो मैं तेरा। नाइट ऑफ विस्परिंग वुड्स और सॉन्ग ऑफ डे पास, नाइस। आई थिंक हमारी फुरीना भी पहले से तो बेटर हो ही चुकी है। ये क्या डोमेन है भाई? अच्छा, great rate but with no defense, HP कभी अच्छे मिलते नहीं आर्टिफैक्ट्स। मुझे कैलकुलेटर देखते हैं तो हम अगर डेली का 180 रेसन स्पेंड करेंगे 10 दिन के लिए तो 1800 रेसन हो। तो देखते हैं 1800 रेसन डालने के बाद में क्या होता है। तो बच गया। ये पीसेस क्यों मिल रहे हैं? आई थिंक मुझे लग रहा है गलती कर रहा हूँ मैं डोमेन फार्म कर। आई थिंक मैं गलती कर रहा हूँ ये डोमेन फार्म कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, ये वाली डोमेन फार्म करता हूँ फिर देगा। नहीं इजीएस्ट वे क्या था यहाँ पे था ना देखने का। ये वाली
एटलीस्ट जो पीसेस यहाँ पे बचेंगे मैं एमिली पे चला लूँगा। ये वाले एमिली पे भी चलते हैं ना। आफ्टर leaving combat for 3 seconds, damage dealt is increased by 50% if the combat ends. In combat, if no burning opponent is nearby for more than 6 seconds, the damage bonus will be decreased by 10 per second until it reaches 0. When the burning opponent exists, it will be increased by 10% instead until it reaches 50. तो 50% maintain कर सकते हैं इसका। ये वाला बेटर रहेगा डोमेन, और जो भी कचरा पीसेस मिलेंगे उसको स्ट्रॉन्ग बॉक्स कर दूंगा नाविया के लिए। अनफॉर्चुनेटली क्लोरिन ये वाली डोमेन खुद से नहीं कर सकते अगर उसके पास ओवरलोड टीम नहीं होगी तो। डिफेंस सेंस, उस पर डिफेंस सेंस थोड़ी ना चलता है, पर अटैक सेंस चलता है ना। और पर ये है कौन सा सेट? हार्मनी इस पे, और ये है अनफाइल्ड रेवरी। डिफेंस थोड़ी ना उस पर। सब दर्द क्यों है ना मेरे? कितनी ही देर हुई है अभी तक? 7 ही तो बज रहे हैं। अटैक क्या ईएम क्यों पर? हाँ। ये एक जगह रुक जाए, इतने अनोइंग बॉस, ये भाई इतने अनोइंग है ना ये लोग। एटलीस्ट ये सब लोग साथ में तो रहते हैं। लास्ट रन है, लेट्स सी क्या मिला हमको। डिफेंस सेंस डिफेंस सेंस नो, 4 स्टार को देख रहा हूँ। कंटिन्यू क्यों किया? मैं क्या हो रहा है मुझे? कंटिन्यू क्यों किया? मेरे पास बेडो नहीं है, उसे भी बफन मिल रहा है। बेडो बेडो इतनी अच्छी है नहीं भाई। और फन फैक्ट भाई, बेडो का दिखाता है ना, मेरे पास बेडो कॉन्स्टलेशन 0 है, और वो मैंने, और ये कॉन्स्टलेशन 0 बेडो भी मैंने
लैंडन राइट में निकाली थी निंगवांग के बाद, क्योंकि निंगवांग में कॉन्स्टलेशन 0 ही होगी, या फिर कॉन्स्टलेशन 1 होगी या कॉन्स्टलेशन 0। बेटो निंगवांग दोनों मुझे कॉन्स्टलेशन 0 वहीं से मिले। सेम गोज फॉर जिनशो, बट जिनशो के लेटर ऑन मुझे वो मिल गए, क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस मिल गए थे शायद 1-2। हाँ मेरे को 2 कॉन्स्टलेशन मिल गए थे बाद में, बट ये इनिशियल कॉपी मुझे लैंटर्न राइट से ही मिली थी। लैंटर्न राइट ने मुझे इतना सेव किया है लीवे के कैरेक्टर्स के लिए। आई थिंक कुछ है नहीं। व्हील स्विच पहले तो ये चेंज कर। व्हाट, अरे यार मिस्टेक कर दिया मैंने, नो छोड़ो यार। थोड़ा टाइम लगेगा लॉन्च होने में वापस। प्रोबब्ली शायद पिंग फिक्स हो जाए उसकी वजह से, क्योंकि पिंग भी प्रॉब्लम कर ही रही थी, तो शायद रिस्टार्ट होने की वजह पिंग भी फिक्स हो जाए। और वैसे भी मुझे यूरोप का स्विच ही करना था, तो ठीक है। मैं ज़रा रियल के क्वेश्चन जाता हूँ। जो आ गया रिजल्ट का इनफ फाउंड किया था, ओके रिजल्ट का इनफ है। व्हाट अबाउट एम्बर, एम्बर के लिए अनफॉर्चुनेटली एम्बर इज वन ऑफ
मैंने चेक किया, शायद से ओनली 1 ऑफ 5 DPS होने वाली है मेरे अकाउंट में, क्योंकि आई डोंट नो कि गेमिंग निकाल सकता हूँ बट लैंडर नाइट में टाइम है। अगर यान पे जब तक मुझे नहीं मिलती है तब तक मुझे एम्बर यूज़ करनी पड़ेगी, बट इवेंचुअली गेमिंग रिप्लेस कर देगा सबको। एम्बर जिंदाबाद नहीं भाई, एम्बर एम्बर जिंदा है, मोर लाइक। मैं बोलूँगा किसी भी केस में एम्बर यूजेबल होते हैं उसके कॉन्स्टलेशन 2 पे बस, उसके बियॉन्ड पहली बात तो एम्बर यूजेबल होती ही नहीं है किसी भी यूनिवर्स में। बट अगर तुम्हें यूज़ करनी भी है, इफ़ यू मस्ट यूज़ हर, एटलीस्ट गेट हर कॉन्स्टलेशन 2। अल्ट क्यों नहीं किया मैंने? हाँ फिट कैसे गया ब्रो? कितना रेजिस्टेंस आता है भाई एक बार फरोला आप होने को उसका? हाँ हिट बॉक्स क्यों डिलीट हो रहा है? एम्बर को टॉप 1% ले जाओ, उससे पहले मैं एम्बर को डिलीट ना कर दूँ।
एनर्जी आती ही नहीं है भाई किसी की। सोच रहा हूँ कि इसको ऑल इंस्ट्रक्टर पे चला के देखूँ, अगर मेरे को इनफ इंस्ट्रक्टर पीस मिल जाएंगे ना। मेरे पास एक कितने ही हैं मेरे पास पर्पल वाले। बर्ज़र्क किधर है? बर्ज़र्क किधर है? दिखता नहीं है बर्ज़र्क। ये फ्लावर भी तो वैसे बड़ा अजीब सा ही दिखता है। आइए ना, लेट्स सी। पर्पल वाले इसमें एनर्जी है। फिजिकल डैमेज है ही नहीं है। तो पूरे गेम में फिजिकल डैमेज पाउडर नहीं है। मेरे पास यही एक इकलौता फिजिकल डैमेज। ओ माय गॉड, बस यही एक इकलौता फिजिकल डैमेज पाउडर। एक सेकंड रुको। फिजिकल बट ऑफ इलेक्ट्रो चला सकता हूँ ना। इलेक्ट्रो चला लेता हूँ। और पीस हो गया मेरा। हाँ, फास्ट इक्विप नहीं, फास्ट इक्विप कर देता हूँ। लेट्स सी क्या इक्विप करेगा ये वाला।
ज़्यादा यार bro. मैंने कुछ एक्साइल जला दिया क्या? शायद से थोड़ा एक्साइल जला दिया मैंने. हाँ ठीक. हाँ. रेज़न कब कम हुआ है?
आज का हो गया भाई मेरा तो। अगर प्रीमो अकाउंट्स देख लेते हैं लेवल पे, कुछ वैसा प्रोग्रेस कोई नहीं है प्रीमो से लेता है। 65 और 75 टूल्स नहीं है अभी भी हमारे पास। आज का हो गया, थक गया मैं आज। सारा टाइम लोग ने ले लिया, लोग इनकी स्टोरी क्वेस्ट ने ले लिया। ठीक है चीज़ है नहीं guys, आज भी यहीं एंड करता हूँ। 7:30 है ठीक है। 7:35 7:46 गुड लग रहा है। चलो फील करना है।